सबको बैठने के लिए बोल दीजिए। Mantri ji will be with us shortly. May I request everyone to settle down, please? Good afternoon, everyone. On behalf of Department of Biotechnology and on my personal behalf, I welcome you all to the 36th Foundation Day of Department of Biotechnology and inauguration of Ramalinga Swami Re-Entry Fellowship Conclave. I heartily welcome our Chief Guest, Honorable Minister, Science and Technology and Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh Ji. We begin this afternoon's program with invocation of the goddess Saraswati. I would invite Mr. Vishambar and team for Saraswati Vandana, please. May I also request everyone to rise for Saraswati Vandana, please. Thank you. मुझको नवल उद्यान दो माँ शारदे वरदान दो मुझको नवल उद्यान दो माँ शारदे वरदान दो मेरी सफल हो साधना मेरी सफल हो साधना पूरी करो मनोकामना विद्या विनायक ज्ञान दो माँ शारदे वरदान दो मुझको नवल उद्यान दो माँ शारदे वरदान दो गुणियों के बिच आ सकूं और कोई गीत सुना सकूं गुनियों के बिच आ सकूं और कोई गीत सुना सकूं ऐसी कला का ज्ञान दो माँ शारदे वरदान दो ऐसी कला का ज्ञान दो माँ शारदे वरदान दो मुझको नवल उद्यान दो माँ शारदे वरदान दो जीवन सफल हो सारथी जीवन सफल हो सारथी तेरी करूं नित आरती समृद्ध सुख सम्मान दो माँ शारदे वरदान दो समृद्ध सुख सम्मान दो माँ शारदे वरदान दो मुझको नवल उद्यान दो माँ शारदे वरदान दो मुझको नवल उद्यान दो माँ शारदे वरदान दो
मुझको नवल ध्यान दो माँ शारदे वरदान दो। Thank you. Thank you, students. Lighting of lamp, I solicit the Chief Guest, Honorable Minister, Science and Technology and Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh Ji, and dignitaries on the dais to kindly light the lamp. I would now call upon Dr. Suraksha Diwan, Department of Biotechnology, to formally welcome members on the dais. I now invite Senior Advisor DBT, Dr. Alka Sharma, to kindly deliver the welcome address. Namaskar. Good afternoon, everyone. Respected Honorable Minister of State for Science and Technology, Independent Charge, Minister of Earth Sciences, Minister of State PMO, Personnel, Public Grievances and Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh Ji, Secretary Department of Biotechnology, Dr. Rajesh S. Gokhale, PSA and former Secretary DBT, Professor K. Vijay Raghavan, Dr. Sudhanshu Rati, Executive Director, Regional Center for Biotechnology, Directors of Autonomous Institute of Department of Biotechnology, Functional Director and Heads of BIREC, a PSU of DBT, who have all joined us today. Former Senior Advisors and Advisors of DBT, Joint Secretary Mr. Sunil Kumar, DBT, the eminent speaker for the Foundation Day lecture, Padam Shri Mrs. Santosh Yadav, senior officials from other ministries and departments, scientists, clinicians, Ramalinga Swami Fellows, faculty and staff of RCB, and my all colleagues at DBT.
On behalf of the Department of Biotechnology, it is my pleasure to welcome you all to the 36th Foundation Day of Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, and also inauguration of Ramalinga Swami Re-Entry Fellowship Conclave. As you all know, today DBT is celebrating its 36th Foundation Day. Just to recap, the Department of Biotechnology was established as a National Biotechnology Board in 1982, following the recommendations of the then Scientific Advisory Committee to the Cabinet, with overall aim to identify priority areas and evolve long-term perspective for biotechnology in the country. Later on, in 1986, on 26 February, it was established as a full-fledged department, that is Department of Biotechnology. During pandemic, the DBT along with this PSU BIREC has played key role in combating the COVID-19, which we will be covering through a documentary shortly. Once again, I welcome each one of you and also thank you for joining us on this special occasion. Thank you. Director RCB, Dr. Sudhanshu Vrati, to kindly address the gathering. Namaskar and good afternoon, everybody. Very warm welcome to the Regional Center for Biotechnology. A very warm welcome to our Honorable Mantri Ji, Dr. Jiten Singh Ji, and many thanks and gratitude for finding time to be with us on this event today. I would also like to thank the Principal Scientific Advisor to the Government of India, Dr. Vijay Raghavan, and the Secretary, Department of Biotechnology, Dr. Rajesh Gokhale, who also happens to be the Chairman of our Board of Governors. A very warm welcome to you, sir. My heartiest congratulations to the DBT family on its 36th Foundation Day. All of us, almost all of us, are part of this DBT's extended family over here. And I can tell you that I can take proud privilege in saying that I have been associated with this family for 35 out of 36 years. So I've been long time working with DBT, first at NII, then at THSTI, and now at RCB. So a very warm greetings to all my fellow colleagues from DBT family on its Foundation Day. Earlier today, Mantri Ji inaugurated and dedicated to the nation our incubator on campus. This incubator has brought culture of innovation and entrepreneurship to this campus. Many thanks to you, Mantri Ji, for finding time to inaugurate the incubator and also interact with our young entrepreneurs. This certainly would have encouraged them to do better and better. We will also be starting the Ramalinga Swami Fellow Conclave today. The inaugural function will be held today. This is a star program of Department of Biotechnology with which RCB is partnering, and we are very proud to be partners with RCB on this program. So again, many thanks, Mantri Ji, for accepting the invitation to inaugurate this program. Once again, many congratulations to all my fellow DBT friends on the 36th Foundation Day of DBT, and my gratitude and thanks to Mantri Ji and all the invited guests that have found time to attend this event today. Thank you very much. Thank you, sir. Next, we are going to project a short film on journey of Department of Biotechnology and response to COVID. The incredible stride of India into the world of biotechnology began in the year 1986
with the establishment of the Department of Biotechnology. I usually recall years back when the Department of Biotechnology had just been set up. Not much was known. Only common asked you what was all about it. Sometimes we have to make an extra effort actually to explain what the mandated agenda of this department was. But it is heartening to see and in fact the indication across the whole year this Department of Biotechnology has come of age and more citizens, scholars and researchers are coming forward to show interest, particularly the youngsters. And in the last few years, ever since Prime Minister Narendra Modi gave a boost to the Startup India, Stand-Up India campaigns and movement, biotechnology has become a very favorite area for startups. The Department of Biotechnology fostered bioscience innovation, translation, and entrepreneurship ecosystem with a focus on generation of biotech products, processes, and technologies spanning areas of agriculture, animal biotechnology, food and nutritional security, affordable healthcare, environmental safety, and clean energy. DBT, along with its 15 theme-based autonomous research institutions, ICGEB, and Biotechnology Industry Research Assistance Council, BIRAC, contributed towards national missions such as Swasth Bharat, Swachh Bharat, Startup India, and Make in India. The robust ecosystem nurtured by DBT over the years played a key role in combating the COVID-19 pandemic, focused on testing, tracking, and protection. The COVID-19 consortium initiated by DBT and BIRAC in March 2020 and Indian SARS-CoV-2 Genome Consortium enabled COVID testing, genomic surveillance, vaccines, and diagnostic development and other biomedical interventions for a rapid response to tackle COVID-19 pandemic. DBT has established city and regional clusters across the country to scale up COVID testing in a hub and spoke model. DBT autonomous institutions DHSTI, ICGEB, RGCB, CDFD, INSTEM, NCCS, IBSD, NII, and INS have significantly contributed in COVID-19 testing. So far, a large number of samples have been tested utilizing these facilities. The indigenous plug-and-play manufacturing facility at Andhra MedTech Zone, supported by DBT and BIRAC, has developed the nation's first mobile diagnostics laboratory, iLab, for enhancing testing in remote and inaccessible areas. iLabs are currently functional at various parts of the country, including the Northeast region. DBT and BIRAC have strengthened indigenous production of RT-PCR kits, rapid antigen and antibody diagnostic kits. BIRAC, a PSU of DBT, has been set up as an industry-academia interface to promote public-private partnership. BIRAC has responded proactively to COVID-19 pandemic by supporting and facilitating development of diagnostic kits, PPEs, ventilators, and also established Air Command Consortium. Major emphasis has been on strengthening vaccine development ecosystem and also development of indigenous vaccine candidates. To fully understand the spread and evolution of the SARS-CoV-2 virus and to tackle its future spread, sequencing and analyzing the genomic data of SARS-CoV-2 was required. The Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium, INSACOG, a network of 52 genome sequencing laboratories and 300 plus Sentinel sites, was jointly set up by the Department of Biotechnology along with CSIR laboratories and Ministry of Health and Family Welfare to monitor genomic variations of COVID-19 virus. Together, the INSACOG laboratories have contributed to sequencing of over 2 lakhs viral genomes. INSACOG's surveillance measures contributed to the COVID-19 outbreak response, which includes tracking the spread of the virus.
track the mutations that could potentially influence pathogenicity and transmission. The genomic information generated by INSACOG is also useful in development of diagnostics, vaccines, and therapeutics. The country is now ready to extend INSACOG network for genomic sequencing and surveillance in the neighboring countries. Research and development efforts of DBT to build infrastructure, human resources, and innovation ecosystem over the years and fast-tracking of regulatory reforms expedited the biotech process and product development during the COVID-19 pandemic. DBT also supported multiple vaccine technology platforms through national biopharma and COVID Suraksha missions. DBT supported the world's first COVID-19 DNA vaccine, ZyCoV-D, and the nation's first protein subunit vaccine, Corbevax, received emergency use authorization. Besides, the nation's first mRNA vaccine and intranasal vaccine developed are at advanced stage of development. DBT also strengthened the vaccine development ecosystem by providing institutional support for rapid ramp-up of animal challenge facilities, immunoassay laboratories, and clinical trial sites, which are instrumental in demonstrating vaccine safety and efficacy. Immunoassay laboratory at THSTI Faridabad is recognized as one of the 7 laboratories globally for centralized assessment of COVID-19 vaccines. The Department of Biotechnology actually expeditiously put up to use to all its academic ecosystem that they have created in the biotech area. We are able to examine and carry forward activities related to pandemic. And they were done in a way that we could actually do diagnostic work, we could develop vaccines, we could also track the variants by doing genome sequencing activities. And the vaccine development by itself is not a very simple thing, because one needs to develop clinical sites, one needs to develop various animal models, challenge animal models, to be able to look at what are the kind of various assays that one needs to develop. And all of these activities were done across autonomous institutions of the Department of Biotechnology. Through the Partnerships for Advancing Clinical Trials program, a science diplomacy initiative in collaboration with the Ministry of External Affairs, DBT has facilitated strengthening clinical trial capacities across 14 neighboring and friendly countries. The department also enabled rapid scale-up of COVID-19 vaccine manufacturing capabilities of Indian industry, augmentation of manufacturing facilities for enhanced co-vaccine production was supported at Bharat Biotech International Limited, BBIL, and the Indian Immunologicals Limited, IIL Hyderabad, which are both functional. It gives me immense pleasure to congratulate and compliment the Department of Biotechnology, its secretary, and the entire team, scientific fraternity, on the occasion of the Inauguration Day. It has achieved a unique glory and distinction for its during the pandemic times, because in this department that the trials of the DNA vaccine were conducted. It is again this department which is spearheading the trials of a nasal vaccine, and that is why in the last few months or so we find more and more of youngsters coming forward showing keen interest to become a part of the biotechnology projects, because they find in it not only the prospects of research, the prospects of study, but also the prospects of startups, and also the prospects of livelihood through futuristic means. And as we move through these 25 years of Amrita Mahotsav and India turns 147, I'm sure it is the futuristic streams of science like biotechnology which would have led India to that pedestal and to that glory. Moving ahead, DBT is committed to tackle the COVID-19 pandemic in a safe, effective, and affordable manner by testing, tracking, and protecting the country from COVID pandemic, with a focus to make the country self-reliant, Atmanirbhar Bharat, and fulfill the responsibility of serving not just the nation but the entire world with the motto of
Vasudhaiv Kutumbakam. Now, I would humbly solicit Honorable Minister, Science and Technology and Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh Ji, to release new guidelines for ease of doing science towards less government, more governance. These guidelines encompass reforms to facilitate ease of doing science and reduction in compliance burden, thus facilitating research. Thank you, sir. The next session is on inauguration of Ramalinga Swami Re-Entry Fellowship Conclave. I invite Senior Advisor Dr. Sanjay Mishra to kindly apprise the audience about this fellowship. Honorable Minister of State of Science and Technology with independent charge, Dr. Jitendra Singh Ji, Principal Scientific Advisor to Government of India, Dr. K. Vijayaraghavan Ji, Secretary, Department of Biotechnology, Dr. Rajesh Gokhale Ji, Director of Regional Center of Biotechnology, Dr. Sudhanshu Vrati Ji, Padam Shri, Shrimati Santosh Yadav Ji, बहुत खुशी हुई कि आप then Senior Advisor Dr. Alka Sharma Ji, distinguished scientists, former advisors who have come all the way, my fellow colleagues, Joint Secretary of DST and DBT, Sunil Kumar Ji, and some of them are connected virtually to this program, and my students. A very, very warm good afternoon. We are going to evening. Good evening to every one of you. And thanks to everyone for coming to this program. And once again, on behalf of the Department of Biotechnology, on behalf of the Ramalinga Swami program, I welcome each one of you who have taken the time to attend this program. And also, once again, I wish and welcome all of you for another special occasion for us, which is the 36th Foundation Day of the Department of Biotechnology. I would like to give you a very brief, very brief, crisp view about this Ramalinga Swami program, for which we are having a conclave, the inauguration of the conclave today. Now, as you are aware that the department has various schemes to improve and to, to increase the quality human resources in the area of biotechnology in the country. And the Ramalinga Swami Fellowship is one of the such schemes which gives an opportunity to Indian scientists working overseas in various fields of biotechnology and life sciences, but wish to come back and contribute to the development of science and technology in India. So it's a scheme primarily aiming to bring back the talented biotechnologists back to the country. This scheme was initiated in the year of 2007 in the memory of Professor V. Ramalinga Swami, who was a clinician, a world-class researcher, and former Director General of the Indian Council of Medical Research. His immense contribution to the National Disease Control Program was remarkable and unforgettable. Through this scheme, we all remember his immense contribution in the nation building. Now, this scheme provides an opportunity to all the selected fellows to take up the scientific research position in India at an institution of their choice, at a city of their choice. The fellowship is provided for a maximum period of 5 years, and the fellows are also eligible to apply for extramural grant from other science and technology agencies. In the initial 4 years,
we were selecting about 10 fellows per year, which has now been increased to 75 fellowships per year in the year 2018. The scheme has become very popular among the biotechnologists working abroad. And till now, around 550 plus fellows have benefited from this scheme, including what we are supporting in the current financial year also. And about 300 fellows have informed that they are being absorbed into the scientific systems and institutions in India. The support has been provided to the fellows to carrying out the research in various areas of biotechnology. There are a number of areas and number of institutions. It is very important to bring them together for the networking for their own professional benefit. And therefore, a conclave is organized every year. We have now organized a 4-day conclave, which is starting from today. Some fellows are present here and some have joined virtually because of the COVID restrictions. Detailed information about the fellows and the area of research interest and their project, their affiliation has been compiled in a directory form. And the idea to develop the directory was to benefit not only fellows, but also to the institution and the scientific community in general. And more important, I would like to highlight here that very often the private sector R&D companies like pharma and biotech, they want to have recruitment of the biotechnology scientists. So this directory will be very, very useful and very handy for them also. Finally, I would like to state one of my personal association with this scheme. 2010 and 11, I was teaching in Australia and I was looking to come back. I myself is a beneficiary of this scheme. So I applied for Ramalinga Swami and I came back. Although I got several other options. But this scheme gave me a confirmation that now I can come back to India. So thank you. I think this proves the importance of this particular scheme. Thank you very much. Thank you, sir, for giving a crisp idea about this fellowship program. May I now solicit Honorable Minister, Science and Technology and Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh Ji, for inauguration of Ramalinga Swami Re-Entry Fellowship Conclave by releasing of Ramalinga Swami Re-Entry Fellows Directory. Thank you, sir. Ramalinga Swami Fellowship has been immensely successful in providing opportunities for Indian researchers abroad to return and contribute to strengthen research and development in the country. I would invite some of the Ramalinga Swami Fellows who have directly benefited from the fellowship to share their experience and impact of this fellowship on their career path. I first invite Dr. Richa Arya from Banaras Hindu University, Varanasi. आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और डीबीटी का अभिवादन कि मुझे इस फाउंडेशन डे पर इनवाइट किया अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। मैं इस बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही हूँ। माय नेम इज़ रिचा आर्या। Currently, I am an assistant professor at Banaras Hindu University, and I came back from US by taking the Ramalinga Swami Fellowship in 2017. So I finished my research PhD from Banaras Hindu University, and then I was a fellow and a postdoctoral fellow and an instructor at Harvard Medical School.
So when I left after finishing my PhD, I always had this dream that after finishing off my training, I should come back to my own country. And certainly, my dream came true when I got selected as a Ramalinga Swami Fellow. And I am still a fellow, and I am an assistant professor at University, Banaras Hindu University. So I came at Delhi University. I joined the Ramalinga Swami Fellowship at Delhi University. And then I moved to BHU, and I want to mention that DBT was very cooperative in helping me move from one place to another. And currently, it's a very brief, just to say what I'm doing. I'm currently working on the stem cell fate regulation using Drosophila melanogaster, which is a fruit fly, as a model. So certainly, I'm here to advocate the benefits and advantages of the fellowship, why someone should go for it. And I would say that it is indeed a great opportunity, certainly challenging because you don't have a sort of permanent position, but yes, it is great because you come back and you can network. You can, I network a lot, and I got chance to be interviewed different places. And I generated some preliminary data using the funding, Ramalinga Swami funding, and that funding helped me actually get the DST Early Career Award. And I think altogether, all these things helped me get an academic position at the University of Eminence, which is Banaras Hindu University. And certainly, I would like to end my presentation by saying that every great scheme always have a scope of improvement, and so is true for Ramalinga scope. And I personally feel that the implementation of the fellowship can certainly be streamlined by establishing a little bit more communication among different bodies, and also enhancing effective communication between funding policymakers and fellows and faculty. And again, I want to thank DBT and all of you for giving me this time and opportunity. Thank you for listening to me. Thank you, Dr. Arya. May I now invite Dr. Ratnesh Jain from Institute of Chemical Technology, Mumbai. Good evening, everyone. Thank you, DBT, for inviting me for this talk, honorable dignitaries and fellow Ramalinga Swami Fellow. So today I'm going to just tell you a story about how Ramalinga Swami Fellowship has played a catalytic role in my career, and how DBT has lowered the activation energy for a successful birth of a researcher. So next 4 minutes, I'm going to tell you 4 episodes: entry, beginning, re-entry, and the journey. And on the slide, you are going to see a chemical reaction, and what I'm going to speak is about birth. So this is episode 1. An individual takes multiple births in his or her lifetime. We are first born as human being, then was as son, daughter, father, and mother. The mother for the subsequent birth is largely an environment and support system. A researcher or a scientist is also born similarly. And unlike 9 months of incubation on mother's womb, a researcher takes much longer incubation and support to become the scientist. DBT and its ecosystem is nothing less than a mother for a life science researcher in India. As we are talking about birth, I'm also born like many fellow Indian citizens in the village of Madhya Pradesh, which is very difficult to find out even on the map today. Now go to the second step, episode 2. There is a saying in Hindi that "Poot ke paav palle mein dikhte hain." And it means that there are enough hints one can guess what the child would like to become. However, a child can only become an adult with those paav with nurturing, mentoring, and support. Back in 2007, DBT started an ambitious young entrepreneurship program called DBT Yes, now called it DBT Best, and which is much before the inception of BIREC as well.
So that program has nurtured young minds and fueled aspirations and ambitions. I was fortunate to have received guidance of Dr. Gupta, who is in audience, and Dr. Natesh that time. Episode 3, that's re-entry Ramalinga Swami Fellowship. The last mile of incubation before birth is very painful for mother and the child. It is a fear of losing womb, which is extremely proactive, comfortable, and the challenge of outside world. Mother is equally afraid, how am I going to handle this child? Believe me, I have seen Dr. Meenakshi's Munsi face in many of Ramalinga Swami Kehlu Conclave, when she has said that how am I going to handle so many fellows? So Ramalinga Swami Fellowship actually was a great scheme, and it's a great scheme. A child realized, but eventually, that in mother arms, the feed and the love, like take care of uncomfortable life. And as 3D movie says, all is well. So Ramalinga Swami Fellowship has given arms, the feed to set up lab, experiments, students, and more importantly, that love, which allow us to grow as a researcher. Journey, the vision. So do you know one of the most stressing situations, this is the last episode, of parent and individual is, what do the parent ask when they become adult and getting job? Settle kab ho jaoge? Shadi kab karoge? Bacche kab honge? All these questions. And our dreams may be different than what parents want. Academy has a similar complex problem. Job kab lagegi? Permanent job for Ramalinga Swami Fellow. How many publication? How many teaching hours? You know, are you going towards translational research? Are you doing entrepreneurship? All these questions are equally important here. So I have been given opportunities in all these fields. Post Ramalinga Swami Fellowship, DBT and BIREC have allowed to foster all these dreams. And I'm working in research, entrepreneurship, industry interaction, and skill development. And all these when DBT started nurturing me from 2007. So the journey ends here? No, the journey doesn't end here. It's just a beginning. And I wish to born as a father now, a senior researcher who can mentor, extend, support, and nurture the ecosystem. I have a vision to create Mumbai BioCluster and a specialized center in Mumbai where entrepreneurs will be born to innovate personalized therapies, antibodies, vaccines, laboratory consumable, enzymes to make our country Atmanirbhar, which is the vision of our Honorable Prime Minister. Thank you once again, DBT team and Ramalinga Swami team for all the support. Thank you very much. Thank you, Dr. Jain, for such an interesting take on your Ramalinga Swami journey. Now, I invite Dr. Shilpi Sharma from University of Pune, Maharashtra. Good evening, everyone. I would like to thank DBT for giving me an opportunity to share my scientific journey so far in India. So like everybody else said, Ramalinga Swami Fellowship has been a major milestone in my career. Back in 2012, do you mind if I use this? I did something. Sorry. Yeah. Okay. So back in 2012, when we were both planning, me and my husband were planning to come back and settle down in India, we were worried about not getting placed in the same city. And trust me, Ramalinga Swami Fellowship has been really beneficial because I applied for the fellowship in 2012 and 2013, both of us could be placed in Pune. I work in Department of Biotechnology, Savitribai Phule Pune University, and I head the disease biology lab. Okay. I head the disease biology lab. So the research grant of 32.5 lakhs, which we get along with the Ramalinga Swami Fellowship, it is indeed very beneficial for us because it acts like a startup grant. Not only that, it's one of the most unique features of this grant that there are no subheadings, there are no budget subheadings, and you could be flexible in spending the money
in the way you want. Like if I want more of equipment, I could go for more of equipment. If I wanted more of consumables, I could go for more of consumables. After this, I really want to tell you about the story. We were blessed with a girl in the year 2014. And I come from a state university, and at that time, there were no rules which were governing maternity leave benefits for individuals who were not employed by the state. So I really remember making frantic phone calls to DBT office, and it was the efforts of Dr. Meenakshi Munshi and Mr. Nirmal Jha who helped me get a 6-month paid maternity leave. Not only me, all women candidates who are SPPO employees have been able to benefit because of the OMs which were sent by DBT to SPPU at that time. Not only that, we were brought in for the conclaves where we were evaluated by mentors, by experts in the field. And trust me on that, the grilling that you get is really beneficial because we could, I at least could rework on my path in the research. And over the years, this is my lab, the imperfectly perfect lab, that is what I like to call it. And we've been able to produce 3 PhD students. There's been a research associate, 1 project assistant from the fellowship itself. And we have a very rich pool of 30 interns, MScs, MTechs, BTechs, who work with us, leading to several publications. We've been able to produce good impact factor publications, and they've been highly cited as well. Not only that, during these conclaves, I could network, I could talk to people around me, and we built a very strong collaboration with Dr. Ashutosh Kumar at IIT Bombay. And under that collaboration, we've been able to get an Indian patent and a grant from the Vadhwani Research Foundation. Not only that, with all the preliminary study work that we got and which I did through the course of my fellowship, I was able to also get a grant recently from ICMR under the COVID-19 call. We've been also able to guest edit a book which is entitled Prognostic Epigenetics by Springer. And the book has really been sold well, and we've been told to rework on it. So we'll be coming out with the 2nd volume soon. So we are what we are because of the tremendous help and support from the DBT family. I'm sure Ratnesh has elaborated much more on this, that Meenakshi Munshi madam was really instrumental in the initial success of this project. And now it's the efforts of Shreya, Dr. Dev Prakash, and Dr. Mishra, which are leading us forward. Thank you so much. Thank you, Dr. Sharma, for an inspiring pitch talk. I now call Dr. Amit Awasthi, Professor, Translational Health Science and Technology Institute, Faridabad. Thank you very much for providing me the opportunity to speak my views on Ramalinga Swami Fellowship, Honorable Minister and dignitaries. So I have joined THSTI in 2012 as Assistant Professor, and this is briefly my journey. I did my PhD from NCCS Pune, then moved to my postdoctoral fellowship at Harvard Medical School and become faculty there before I joined THSTI. So as a researcher, I have been trained as an immunologist, where in the PhD, I worked upon host pathogen interaction to understand how a parasite of Kala Ajar, disease Kala Ajar, subvert the immune system and evade the immune system. And some of these publications and awards from the PhD. And then I'm subsequently moved to US to expand my horizon and the research training to understand the role of pathogenic T cells, particularly cells which are inflammatory in nature, in inflammatory diseases as well as autoimmune diseases. And this was the very crucial time for me to decide to come back to India, as I always wanted to come back to India to serve my country.
And therefore, this is the thing which Ramaslinga Swami Re-Entry Fellowship got advertised, and I quickly applied. And one of the feature of this fellowship, as Ratnesh and Shilpi mentioned, that this is a very flexible scheme. So there is no head. You can really go from instrument to consumable, consumable to instrument. If not required, you can have this flexible scheme. And this helped my lab to jumpstart, very quickly procure the chemicals, the consumable, recruit manpowers, and do the initiation, the program which I really envisioned in US. And this is something which I can really quickly tell you that some of the chemicals and protocols and the reagents, what I have actually procured during the Ramalinga Swami Fellowship, actually helped to set up very quickly 2 platforms in THSTI. One is the challenge model for COVID-19, where we did a lot of vaccine efficacy in the animal models, both hamster as well as ACE2 transgenic mice. And the second platform, what we established, is the cellular immunology platform to test the vaccine efficacy and vaccine effectiveness, doing the cellular assay for various vaccines. So I think this is a great program, and this can further be improved. Definitely, there's a lot of, things always have more broader picture that can be done. But this is something bringing back to the skilled people from the overseas, I think will contribute to the Prime Minister Narendra Modi ji's Skill India and Atmanirbhar Bharat. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Awasthi, for sharing your views. I now call Dr. Naresh Chandra Bal from Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar. Hello. Good afternoon, everyone. And thank you very much for giving me this opportunity to present my views on Ramalinga Swami Fellowship. In my life, there was a time when all the doors was closed for me to return back to India. But I always wanted to come back to India. For one reason or the other, I was not getting a position. Then I thought that it's maybe destiny, and I started working on living the American dream. And fortunately, that started working. I got a K1 award from the NIH, and I got a tenure track faculty position in the US. Around 1 year later, I was awarded this Ramalinga Swami Fellowship. And because I always wanted to come back, I took this opportunity, and I feel that this word re-entry is actually justified. And I am a living example of that. And this gave me the opportunity to come back. And when I see now my lab, you can see my lab picture, I am able to guide some of the young minds and ignite them to do research. And I established my lab in metabolic disease, specifically focused on muscle biology. So I started my fellowship at KIIT KIT University in 2016. And I knew that this fellowship is a small one. I may not have a lot of luxury in this fellowship. So in the first year itself, I started working on procuring more funding for my research laboratory. And I applied several grants. But fortunately, this Early Career Research Award from ACRB worked out. And with these 2 fellowships, I could establish my own lab and prepare some preliminary data. And in the year 2019, I could get a grant from the DBT.
And also, I could compete for the visiting professorship at University of Central Florida, USA, in 2018 and 2019. And now I have applied 3 Indian patents. I'm serving as associate editor in 2 of the reputed international journals. And I am tenured as associate professor in the KIT University, which I would thank the KIT University too. I have 4 PhD students working in my laboratory. I have trained 1 NPDF, 2 project fellows, and more than 20 interns. And with all these people's effort, we could publish about 17 papers till now. Several are there in pipeline, and we have published in good journals with total impact factor of 113, cited more than 400 times. And for everything that I have achieved in these years, I would thank all the Ramalinga Swami Fellow team members at DBT. They facilitated me to do research. This is a very flexible program. I even could visit US during this program unhindered manner and get the visiting professorship from UCF. And this freedom is kind of, I could not have done it. And for this, I would thank the DBT team, especially Madam Meenakshi Munshi, Mr. Nirmal Jain, and Dr. Chaturvedi, who have helped me a lot throughout this process. And I would make a small suggestion that this contingency amount that we get as Ramalinga Swami Fellow is very insignificant to do biotechnology research these days. So if this could be enhanced significantly, definitely the Ramalinga Swami Fellows, the good thing is that it is flexible, but it's very insignificant. And when I compare my NIH grant, K1, which was more or less similar to Ramalinga Swami Fellow, it was also for 5 years. And we used to have a contingency grant of about 25,000 to 29,000 US dollars. So this can be enhanced. That would be good. I thank Ramalinga Swami for giving me this opportunity, as well as do my family commitment. As Indians, we have always family commitment. With this fellowship, we can balance both science and family commitment, which is good. Thank you. Thank you, Dr. Bal, for sharing your views. And I thank all of you for highlighting the success of the Ramalinga Swami Fellowship Program. And it is also heartening to see that this fellowship could also enable many women scientists to contribute to the STEM fields in the country. May I now request Secretary DBT, Dr. Rajesh Gokhale, to kindly address the audience, please. Honorable Minister of State of Science and Technology and Earth Sciences, Independent Charge Dr. Jitendra Singh Ji, Principal Scientific Advisor and Formal Secretary, Department of Biotechnology, Professor Vijay Raghavan, RCB Director, Professor Sudhanshu Vrati, my senior colleagues, Dr. Alka Sharma and Dr. Sanjay Mishra from Department of Biotechnology, directors of various autonomous organized institutions, Ramalinga Swami Fellows, several DBT past and friends and other colleagues who are part of larger Department of Biotechnology success over a period of time. And last but not the least, our invited guest, Mrs. Santosh Yadav ji.
Let me first of all congratulate all of you on this 36th Foundation Day of Department of Biotechnology. I think the role of Department of Biotechnology has been really to inculcate and develop a biotechnology research ecosystem, innovation ecosystem in the country, which it has so fabulously done over the years, as you have recently heard, actually. It has created a strong ecosystem, and it has created a research innovation environment that has an absolute quantitative terms one can define how it has changed the dynamics of how this country has moved from the, in terms of its biotechnology prowess, what it has done from a period of time. I think what is also remarkable to understand is the future. I always look at, I mean, the past has been glorious, the future has to be even more better and far better, actually. And clearly, as you would see, Ramalinga Swami Fellows, are the bright future going ahead. I mean, they are the one who's going to carry the burden of taking biotechnology further ahead. And I congratulate each one of them who are here and who are on the online. So thank you very much for joining this, and thank you very much for all the wonderful things that you're going to do in future, actually, as you think biotechnology would do this work. I won't touch the biotechnology's prowess work that we have done over the years, or really, it's all documented and it's all several years have been talked about. It's really people who have been cultured and who have been grown around are the real strength of this. Of course, you would have seen how in the movie that we just showed, that how COVID pandemic, the critical role of Department of Biotechnology was actually played out in all the aspects of diagnostic, detection, vaccines, genome tracking, in variety of ways that one can do that. In all of these, one of the very important role played by is the leadership at the helm of our Department of Biotechnology. I must say, Dr. Jitendra Singh has been extremely important to this. I must say I'm honored and it's my privilege to work with him. He's not only actually very, very particular about the things that the way you do, but is also very, very knowledgeable with his historical perspective, makes all this very easy. So from a Department of Biotechnology perspective, I think we should all give him a good hand for being, and thanking all of us for this wonderful opportunity they have. I think it's very important for me to understand all the people who have put this department together, actually. I mean, Professor Vijay Raghavan is here and several of other advisors and senior advisors who are there. But it's also the younger people who contribute to success of this glory that we all go into what I call reflected glory of each other's presence. And this kind of enhances the value of each other. And I think the key for the department moving ahead is to really get this reflected glory into a conglomeration of activities that together functions into a department that actually make us feel glorious in future to go. As Amrit Kal, we look at next 25 years of period that we are talking about, actually, I'm sure each one of you would believe that it's the bioeconomy that's going to play a major role in defining the nation's path, how it progresses, actually. And what that means is the Department of Biotechnology will be at the helm of all the activities that we look at, either it's good to do with health, or to do with agriculture, or to do with climate change, or to do with animal health. And all of these together are going to have a tremendous amount of impact to look at, actually. And so clearly, it tells us that it puts us more pressure or an opportunity, whichever way you look at, to in fact deliver. And in fact, what we're going to do is try and come together in a form that we actually will make it more feasible, more agreeable, and much more rapid in terms of decision making. As you can see, one of the aspects that we actually released today is the flexibility schemes that Ramalinga Swami Fellows talking about, actually. In fact, we've built some guidelines that are more flexible than what it was in the past, actually, which Honorable Mantriji just released now, actually. And this is going to be a very, very, it's not, you can say it's not game changer, but it's certainly towards directions to make it easy for everybody to work and make everybody to get better and better and be able to come together and carry out these activities. I need to thank a couple of people. This is a short journey for me over here, and I need to thank people in DBT presently who have really helped me out to, put these pieces together. Really two younger people, Vashne and Kamakshi, was mentored by Shailaja, in fact, put together these documents over a period of time, and we've been able to re-put together actually this whole process together.
And you would all realize that it's wonderful to see younger people enthusiasm and their energy to bring back put in more enthusiasm and put in all the more time to be able to make what they will see in future, the impact of it actually. And that's why the younger people's engagement becomes very, very critical, because the impact of this will be seen in their own periods of time. And I think that makes it very, very important to look at. Finally, I would like to just, say one another point that I think always is very, very critical in what I have thought about actually. And I like this Sanskrit shlok, which sometimes I talk about actually, which is a very, very good version of what you say. It's like, it says, Udyamena hi siddhante karani na manorathe, na suptasya simvasya pravishante mukhe mriga. It's only the efforts that you put in is really going to make the difference actually. And at this stage, the government and you can see the future entails that this is the opportunity for biotechnology department to change the course of the country. And if you are at the cusp of that, I don't think any one of us can feel that we are actually should be lagging behind. And I really think that all of us should really pull ourselves together and make this country proud for all of us that we are here for. So again, thank you very much all. I hope all of you will contribute to this nation building and Atmanirbhar Bharat programs of this government of India. And Azadi Ka Amrit Mahotsav that we're celebrating now, the 100 years would be absolutely stunningly with glorious actually. Finally, one very important word for Mrs. Yadav. Thank you very much for coming from all the way from Haridwar. This is really grateful to you. We just thought in DBT that we should engage with other peoples outside Department of Biotechnology because they become our ambassadors to talk outside actually. We can all keep talking about ourselves. And I'm sure with her strength that you will hear about and her character and charisma, she will take glory of DBT more further and carry out activities. Again, I thank you all of you who have been part of this journey, and I'm sure you will enjoy the next 25 years of the journey along with me. Thank you very much. Thank you, sir, for beautifully summarizing DBT's activities and stressing on the importance of stakeholders at all levels for their contribution to the research ecosystem in the country. We are delightful to have PSA to the Government of India and former Secretary DBT, Dr. K. Vijayaraghavan, amongst us. Sir, I would humbly request you to share a few words with us. Thank you very much. Honorable Mantri Ji, Dr. Jitendra Singh, my colleagues, Dr. Rajesh Gokhale, Sudhanshu Vrati, Dr. Alka Sharma, Dr. Sanjay Mishra, and everyone here in the audience, including our distinguished guest, Padma Shri Mrs. Santosh Yadav Ji. Namaskar. I will be very brief, and a lot has been said already. First of all, I'd like to congratulate the Department of Biotechnology on the Ramalinga Swamy program. Although I speak as an insider, this is a program worth patting ourselves on the back. It's, as you heard, really had a great impact on the country. This and the Department of Science and Technology's Ramanujan program. We must also appreciate the extraordinary efforts put in by Dr. Meenakshi Munshi, advisor who is retired now, who's not here today, but she needs to be really congratulated for taking the program steadily, and I'm sure it will go forward even better. Now, one important point about the Department of Biotechnology is to ask what is its purpose. And its purpose because it covers all of life sciences, but also a purpose which overlaps with the Department of Pharma, with the CSIR, with the Health Ministry, with the Environment Ministry, with the Energy Ministry. It has to constantly be nimble and excel if it has to justify its excellence. And it's done that. From its start, from the oil missions, for example, the Indo-US Vaccine Action Program, the DBT's Master's Program in Biotechnology, and its autonomous institutions and other major programs. It has been absolutely extraordinary. I would like to say that DBT's impact as a consequence in agriculture, so for example, the generation of new varieties of rice, in health and nutrition, in vaccines particularly, the vaccines against
Japanese encephalitis virus, against typhoid, malaria. All these programs are ongoing. The well-known rotavirus program, which has been successful, work in malaria and tuberculosis at the ICGB, the National Institute of Immunology, JNU, and other laboratories in the country. These are all important programs initiated by the DBT in a collaborative, collegial manner with institutions all across the country and with other departments. And much has come out of them. DBT has also succeeded enormously in seeding major international collaborations, such as through the Human Frontier Science Program, the membership of the European Molecular Biology Organization, and the DBT Wellcome Trust Alliance. And these need to be nurtured, taken forward, and we shouldn't create these extraordinary structures and let them slip at any time. DBT's ramping up of industry collaborations through BIRAC is absolutely fantastic. But we must remember that this change came about in a relatively barren landscape. So going from relatively nothing to something significant is a great achievement, but it's relatively easier compared to going now from into the future, where biology becomes integrated with computer science, data sciences, sensors, and so on and so forth. So BIRAC has a great challenge going forward right now. During the COVID pandemic, you've heard about what DBT has done, extraordinarily collaborative, but those were times when emergency approaches to solutions made us do these things with great nimbleness. That same nimbleness, with the ease of doing science, which is now released today, is what we need to see going forward. And therefore, we must realize that even as the pandemic wanes, there are things we must do with equal nimbleness and a lot of coordination as we're doing now. So looking ahead, the key issues are about synergy and being daring and working together with all other science departments and with ministries. And that's exactly what Dr. Jitendra Singh ji has initiated, both having meetings regularly with all the science secretaries so that there is a coordination, and in a manner similar to the Gati Shakti, Vigyan Shakti directions have been put together so that we all know what other departments are doing and take that forward, and also collaborate with various ministries so that their demands for facilitating their goals through science are met. So I'd like to stop here and thank you once again, and congratulations to the Department of Biotechnology on a great 36 years and another great 36 years ahead. Thank you. Thank you, sir, for your guiding words in charting the course of department in future. I humbly solicit Honorable Minister, Science and Technology and Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh ji, to kindly address the gathering, please. Seated on the dais, Principal Scientific Advisor to the Government of India, Dr. Vijay Raghavan, our colleague and Secretary, Department of Biotechnology, Dr. Rajesh Gokhale, Dr. Alka Sharma, Dr. Mishra, Dr. Sudhanshu, senior members of the faculty, students, ladies and gentlemen. At the outset, it's my pleasant obligation to congratulate you on the Foundation Day of the Department of Biotechnology. And also, I'm pleased to inaugurate this Ramalinga Swamy Re-Entry Fellowship. It's been quite a learning experience over the last 45 minutes or so, listening to different speakers from their personal experience, beginning from Dr. Mishra, who came here for Ramalinga Swamy Fellowship. And I think the Department of Biotechnology very wisely gave him the task of handling the same. And then I was also keenly listening to the Ramalinga Swamy Fellows, one after the other. One of them, I think, Dr. Jain, saying that वो फिर पूछने लग जाते हैं कि शादी कब करनी है और खाना कब खाना. I think I belong to a generation who's been lucky enough to see the transition. In fact, in my times, if one of my colleagues said that we are into research, तो शादी होती ही नहीं थी. So you still are lucky that they would ask you कब करनी.
In our case, it was taken for granted that researcher is meant not to be married, not marriageable. और कभी-कभी ये भी पूछते थे कि अच्छा ये तो करते हैं लेकिन वैसे क्या करते हैं? So I think you have been born in luckier times and also with a luckier facility and a lucky milieu and a luckier ecosystem. And yes, one common streak among all these fellow persons who were speaking was that they were full of praise for the department. So I don't know whether to compliment Dr. Rajesh Gokhale for good tutoring as that has been done or to compliment them for their spontaneity. But what I am saying is that all of us are students of science. I wish they had also given us some suggestions about how better to be from here and what pitfalls they notice over the course of their experience, because all of them have gone through that and now they are also part of the larger biotechnology family. So we could actually improve upon. Of course, all of us know we are very good. So that goes without saying. So next time when you make your presentation, you say, it's assumed that you are very good. And thereafter I say that this is not good. And we won't mind. So that's actually what we are looking for from your experiences. And also, this is also heartening to see a scenario of reverse brain drain happening in India. And how best to facilitate is what is our immediate responsibility. But when we were young, you see, one of the essays in English language was on brain drain. It becomes such a huge phenomenon, such a huge problem and an issue before India. It's no longer talked about because this has got reversed. But how best to sustain this reversal? And I think this reversal has been promoted and facilitated to a large extent because we have someone like Shri Narendra Modi as the Prime Minister, who's been himself very keen, his personal outreach wherever he goes, he's been very encouraging, and he's being ready to walk extra mile to encourage the scientific pursuits and scientific fraternity. And therefore, we have a government which gives high priority to these kind of projects and these kind of ventures. Now, Dr. Raghavan very appropriately said, what is biotechnology? Actually, I think he himself personifies the definition. Because till a few years ago, because it's a 36-year-old department, in fact, my exposure to the Department of Biotechnology happened about 26 or 25 years ago. And since I was already working in a medical school, I took leave for a few months to work in the department just to familiarize myself with what was happening there, because it's all new to India. And the department was just about hardly a decade old. And in fact, even in my own department, I had to convince them what I was about to or up to. So what was biotechnology? It was difficult to explain whether it was biology or technology, and whether it was an engineering subject or a medical subject. And why I say Dr. Raghavan himself is an illustration of that, that I don't know how many of you in this room know, because I've known him over the years. He was a topper from IIT Delhi and topper with the stream of chemical engineering. And today you are honoring him as a biotechnologist. Because in his days also, like in my days, biotechnology was hardly heard of. So it's been a long, amazing journey, and we belong to a generation where we saw this evolution happening. And today we have come to a stage where every new discovery, a new development, a new invention in the Department of Biotechnology is readily owned up by others who didn't have anything to do with it. They do all the trials, of course, in this premises only, for the DNA vaccine. And it is owned by a manufacturing house. And I hope the same fate is not met by the nasal vaccine. So suddenly it has assumed significance, thanks also to the pandemic. And I was presently amused a few months back, about 2 months back, when
I came across the report of a survey conducted on class 12 students in Delhi, where I think biotechnology appeared as a favored subject, I think at number 5 or number 6, whereas it was hardly known earlier on. It used to be either engineering or medicine or maybe civil services or whatever. So we have come a long way, and it has been a continuous journey of progress from one stage to other, and it has been possible because of tremendous diligence, perseverance, determination on the part of all those persons whom Dr. Gokhale was naming. Today we have 15 theme-based autonomous institutions, we have 2 BSUs, we have an International Center for Genetic Engineering. And I think above all, the biotechnology department, of course, used COVID as an opportunity to showcase to the world what it was all about. In the terms of the vaccines, as I was mentioning, in the terms of the PPE kits. And yes, another recent achievement was that of the first ever mobile testing lab, the iLab, which we very consciously decided to launch from Mizoram because we thought that was one of the most far-flung states of the country in the Northeast. And biotechnology, thanks to these popular channels who talk more about COVID than many of us, sometimes also pretend to know more. And during the lockdown period and thereafter over the last 1 year, there were so many programs happening, panel discussions, one after the other, that they fell short of the medicos. They were even catching out of residents wherever available to fill in the panels. But as they say, every adversity accompanies the virtue. At least that has familiarized the common citizenry about what is all about in biotechnology. And also the relevance of the scientific experimentation going on in India. Because science, as Mark Twain once said about economics, economics is too serious to be left to economists. The science is also too serious to be left to scientists. And science is not the domain only of the PhD scholars or the scientists. Now, Rajesh Gokhale was repeatedly complimenting and rightly referring to Mrs. Yadav, who's here. और अभी इसके बाद हमने पहले भी इनका सुना हुआ है संबोधन. She is actually a scientist in her own right. The way she would with ease climb up Mount Everest. जैसे आप 2 सीढ़ियां चढ़ती हैं घर को, एवरेस्ट होके आ जाती हैं. आप जब तक बगल वाली इमारत में ऊपर चक्कर लगा के आएंगे, तब तक ये एवरेस्ट का एक चक्कर लगा के आ जाती है. तो ये साइंस नहीं तो और क्या है? Because she has devised her energies, her faculties, her physical attributes, tuned them, oriented them in a very scientific manner. और परमात्मा ने इनको बख्शा, इन्होंने PhD नहीं की. अगर PhD की होती तो सारा समय उसी में चला जाता बहन जी, आपको अभ्यास करने का अवसर ना मिलता. So basically, it is temperament and the pursuit and your focus then, generates that scientific instinct inside you. And I'm glad that during COVID times, we have succeeded in doing that. Now, as far as the Ramalinga Swami fellows are concerned, I recently made a suggestion to the Secretary Biotechnology also and Secretary DST also. We have this age relaxation of 5 years after 35. So I said, this doesn't appear to be very logical because many of them may not be, there may be some, for example, somebody comes back to India at the age of 30 or 40, then where does the relaxation happen? So it should be 5 years regardless of the age to take up a government job, if at all he or she wishes to take. I think when this was designed, must have kept in mind that most of the government jobs, the upper age limit is 35. So they gave a relaxation of 5 years, like a good bureaucrat does. Ek line likh di. But it doesn't applicably happen when you see in practical terms. So very few of them would come back to India. In fact, many of them are not coming back because they have other problems, not the scientific problems. I had IIT pass-outs of the early 1980s who actually wanted to come back to India. Then I arranged a project also for them.
I think in space, and I said, you give it a trial. If your heart gets back to India, then you. So they were actually ready, but the problem was that their children were not allowing them to go. So that gentleman who was also known to me for many years, he said, my children don't even like to come to India for a vacation. So how would they like to come back to settle here? So the problem actually goes on increasing when the years pass down. So earlier the better. You try to motivate them. I think we should also think of, generating awareness among the diaspora abroad. And we have a number of projects actually, even in biotechnology, like that. In this institute, we have for Alzheimer's, we have the other one, genomic selection, started in Varanasi recently, which should interest many of those who've gone abroad and who may not find such facility over here. Because we have a huge resource of research subjects. Even in the pre-independence era, many of the leading, at least in the stream that I work in medical sciences, came from abroad to India because they didn't have the tropical problems over there for the research in tuberculosis. In fact, somebody was talking about Kala-Azar here. Yeah. So if you go to Madras, the General Hospital Madras, if you go to the pathology lab, you find a slab there, Donovan's lab. So Donovan actually came all the way to India because they didn't have these research subjects over there. So we have such a huge variety of diseases here. Good for a researcher, bad for the patient. यहाँ सारी बीमारी मिल जाती है, हर किस्म की बायोलॉजी भी मिल जाती है. So there are resources available for research which are not available abroad. In fact, tuberculosis also came to be known over there only after the AIDS came in. And till about 20 years ago, I don't know whether that practice still exists, Prabodh will tell us. We used to have youngsters from UK as interns in AIIMS. It will be very fascinating to see these fair young girls, boys moving around in the campus of AIIMS. They would be so visible from abroad because everybody knew that they had come for a 3 months training, internship in tropical diseases in the medicine wards, to see leprosy, to see tuberculosis, to see all these malarias, cholera, all these things, which of course have now declined even here. So I think we could actually encourage this phenomena if we make a little more effort, and also that with the kind of push that Prime Minister has given to the startup movement in the country, biotechnology is one area which has a lot of startup avenues to offer, both in the dairy sector, which is not fully explored. And I think what is required is more of awareness and more of integration, as Dr. Raghavan was just now mentioning, which we already started and we are actually trying to integrate further. And it's not only integration within, it's not only intra-integration, it's also inter-integration. So we have to have So Dr. Raghavan is trying to, what is it? हाँ, तो तभी आपने जल्दी निकाल दिया यहाँ से. Because somebody must have complained that I put a extra burden on the exchequer. Because being from the same fraternity, you made the best use of my 3 months term over here. I know, that's what I'm saying. No, that's right. Because the point here is, now you are taking me back to the other subject. The point is, what I have always realized is that one difficulty which we are now slightly getting over in the Modi era, which again credit goes to Prime Minister, the lack of esteem attached to the scientific career and scientific research. That's why I said कि वो पूछते थे कि ये तो करते हो, वैसे क्या करते हो? और ये भाई साहब तो कह रहे थे शादी का, कहते थे शादी होगी नहीं. So that, and now, like good scientific workers, if you do a survey, which somebody could take up, which I was making an observation the other day,
At the class 12 level, the maximum number of students are from science stream. Just give it a thought. Out of 100 students in a class, you'll have 18 science stream, only 20 in arts. But why don't any of them come forward to take up a career in science? Because they are looking for something else, not for science. They're looking for a good score to get into a medical school, to get into an engineering college, or to get into civil services, or via IIT into civil service. So, IIT ki bhi seat waste ki aur wahan par. So that mismatch is there. That is because we have lack of esteem. Now what ma'am reminded me, now to collaborate to what you were saying, ma'am. About 3 years back, we had the Vice Chancellor of the Cambridge University here. He happens to be a microbiologist. He's a grand elderly, 80 years old, because they don't retire. So that is another advantage there. The teachers and the lawyers don't retire. So I was sitting, there were other 1 or 2 medicos also with me. He said, Doc, I must compliment you. My university will be closed if I didn't have PhDs from India. So when I went away, I asked the person, I said, was it a compliment? He said, what do you mean? I said, because our boys and girls go there for a trophy, not for a PhD. Whereas in Britain, a boy or a girl would enter into a PhD or take up a PhD course only if he or she has decided to devote the rest of the life into that. It doesn't happen here. You come back with a PhD in biotechnology and you can become an MD in a computer company. And the employer is happy telling the morning walkers or in the evening club कि मेरा MD PhD है Cambridge का. And the MD is happy telling his wife के fat pay packet पिला. So neither the spouse bothers about the PhD nor the employer bothers about the PhD. And one who has taken it has already forgotten it. And in the course of time also forgets the subject. So that mismatch is why I said if we link it, unless we link it with livelihood, and that was the reason I still feel that we have to have good, lucrative means of livelihood for the scientific fraternity so that they take it up as a career also along with it. So they lose out on it. And that is also been my view in the last few months about the startups. What has been bothering me over the last few months is that the startup movement is picking up in the country. But are we giving enough thought to sustainable startup? We have startup now, it takes a grant, then somebody tells him like, ke shadi kab karni hai, so he sees an ad in the newspaper, fills in the form of the civil services, becomes a babu. So biotechnologist becoming an undersecretary. So that is the glory of it. So to sustain startups also we need to link it with sustainable means of livelihood. And for that also we have some ideas, as I was saying, wider integration within and integration with the industry. If the industry representatives become members of our bodies or governing bodies, let them also contribute it. They should own up our startups. Let them tell us what kind of technical resource they require. We'll train, let them fund. So once they're funded, they'll pinch them. They'll take them back also. So I think some kind of device for sustaining the startups financially also in the long run is what is going to do is to serve both the purpose, to give them esteem in the society and also to give them a lasting means of livelihood so that they don't look for something else. Anyway, I can't go on and on because I've been invited here as a chief guest, not as a faculty session. Most of the time I was doing this, so it's like that. But nevertheless, I leave the podium with the optimistic thought that the best of biotechnology is yet to come. And I hope we live to see that. Thank you. Thank you, sir, for your enlightening words. We are certain that department will soar to new heights under your able guidance, vision, and leadership. I would invite Secretary DBT, Dr. Rajesh Gokhale, to felicitate Honorable Minister Ji by presenting a shawl and a memento.
May I now request Secretary DBT, Dr. Rajesh Gokhale, to felicitate PSA to the Government of India and former Secretary DBT, Dr. K. Vijayaraghavan, by presenting a memento. I would now call upon Director RCB, Dr. Sudhanshu Vrati, to felicitate Secretary DBT. May I now call upon Dr. Suraksha Diwan, DBT, to felicitate Director RCB, Dr. Sudhanshu Vrati, by presenting a memento. May I again request Dr. Suraksha Diwan, DBT, to felicitate Senior Advisor, Dr. Alka Sharma, by presenting a memento. I would again request Dr. Suraksha Diwan, DBT, to felicitate Senior Advisor, DBT, Dr. Sanjay Mishra. It is my privilege to propose vote of thanks on behalf of the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology. At the onset, I would like to express our heartfelt gratitude to the Honorable Minister, Science and Technology and Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh Ji, for sparing his valuable time and gracing the occasion with his presence. I take this opportunity to extend our sincere thanks to Secretary DBT, Dr. Rajesh Gokhale Ji, for his mentoring and support all through. We are immensely thankful to the PSA to Government of India and former Secretary DBT, Dr. K. Vijayaraghavan, for joining us in celebrating the 36th Foundation Day of the Department. We are also immensely thankful to Director RCB, Dr. Sudhanshu Vrati, for hosting today's ceremony. We are thankful to his entire team for providing all the logistics support and their untiring efforts in hosting the event. Thanks are also due to JS Administration DBT for his constant support. We are extremely thankful to the former senior advisors of the department and all the directors of DBT Autonomous Institutes who could make it for today's function and join us today. We are also grateful to all the Ramalinga Swami Fellows for joining us today, and I wish that the Ramalinga Swami Conclave is a huge success. I also thank all the members of the audience for their presence, and I also thank Padma Shri Mrs. Santosh Yadav Ji for gracing the occasion. Last but not the least, I would like to thank the senior officials of the department, the whole DBT family, for their untiring support in organizing this event. Our heartfelt thanks to all of you. Now I request all members from the dais and members of the audience to kindly join us for high tea arranged outside the auditorium. All are requested to reassemble for the post-session of the Foundation Day lecture. Thank you.
5:50. May I request everyone to reassemble at 6 o'clock, please? Kindly reassemble after 10 minutes, please.
Welcome back, everyone, and my sincere apologies for the delay in our schedule. By now, you must all be aware that for the Foundation Day lecture, we have amongst us a very, very special guest today. She has put India on the global map by setting the world record of becoming the first woman in the world to scale Mount Everest. Mountaineer Padma Shri Mrs. Santosh Yadav has done this exceptional feat not once but twice. That's not all. Mrs. Yadav. I request members of the audience for a big round of applause for her many laurels. हरिओम। हृदय की गहराई से आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रारब्ध पहले भयो जन्म पाछे, यस अपयस जन्म मृत्यु लाभ हानि सब विधि हाल। Every action has a reaction, the third law of Newton, equal and opposite. संजय जी ने जब मुझे कॉल किया, फोन आया उनका, तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैंने कहा ये मेरे बहुत हृदय के करीब है विज्ञान, मैं जरूर इस प्रोग्राम में आऊंगी। क्यों मैंने कहा हृदय के करीब है? ये केवल पूरे भारत के लिए ही नहीं,
पूरे विश्व के लिए जरूरत है विज्ञान की। और वो क्यों? उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी। मानव का जो उद्देश्य है वो सिर्फ मात्र स्वस्थ रहना है। और उसका जो स्वभाव है वह है खोज करना। ये अक्सर मैं बात हर जगह कहती इस बात को। उद्देश्य स्वस्थ रहना है और स्वभाव जो है वह है खोज करना है। हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ खोज करेंगे। जैसा कि एक परमाणु का प्रयोग, हम लोग उसकी जो खोज हुई तो बिजली बनाने के लिए भी और बम बनाने के लिए भी है। तो ये बात हमें निश्चित करनी होगी कि स्वस्थ रहना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मैं आती हूँ बात कि साइंस विज्ञान क्यों जरूरी है। मेरा ये मानना है, मैं अनुभव के आधार पर जो बात कहूंगी, पूरे विश्व मानव जगत को 3 चीजें बहुत ही आवश्यक है। पहला, विज्ञान, संस्कृत, संगीत। विज्ञान हमारी बुद्धि को खोलता है, संस्कृत हमारे हृदय को, संगीत जब ये दोनों चीज खुल जाती है तो उसको रिदम के लिए, मानव जीवन के लिए रिदम बहुत आवश्यक है और वह है संगीत। हम जो भी जीवन में कर पाए हैं, बहुत सारे कारण हैं, पर उसमें एक मुख्य कारण है रिदम। बच्चों के लिए, हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत, उनके पास समय होता है। यदि आप, मैं नहीं कहती कि ह्यूमैनिटी में कुछ भी नहीं है, वो भी एक विज्ञान है, इतिहास भी एक विज्ञान है। पर कौन सा इतिहास? साइंस का भी एक इतिहास है। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ी हूँ, उसमें भी एक सब्जेक्ट होता था हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स। तो हमारे लिए सबको जानना फैक्ट्स का जरूरी है। अपवाद हो सकते हैं कि हमारे ह्यूमैनिटी के बच्चे भी बहुत अच्छा, लेकिन जितना एक साइंस के विद्यार्थी को संभालना आसान है, क्योंकि वह एक अपने आप में ध्यान है। विज्ञान को पढ़ना आपको काफ़ी लेबर, काफ़ी समय देना पड़ता है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। बनिस्पत की, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम किसी एक नौकरी या फिर किसी सम्मान या फिर किसी एक नाम, उसके लिए नहीं, बल्कि किसी एक विषय को जानने के लिए। मैं कुछ विद्यार्थी लोगों से, जैसे ही मैं आई आपके प्रांगण में, तो उनसे मेरी बातचीत के दौरान मैंने एक ही बात कही कि पहले हमें क्या करना चाहिए, उसका चयन जरूरी है। तो पहले यदि हम, किसी मैडम ने भी मुझसे पूछा कि आप क्लाइंब की तो क्या मोटिवेशन था आपका, मैंने कहा जिज्ञासा ही मेरा मोटिवेशन था। डॉक्टरों ने मुझे फेल कर दिया था। पहली बार, मेरा पहला दिन इंस्टीट्यूट में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी में, उन्होंने कहा ये पतली दुबली, इतनी नाजुक सी है। मेडिकल हुआ तो मेरे लंग्स छोटे पाए, बल्कि मैं एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी थी, काफ़ी समय की बात है। तब सेकंड टाइम जब जा रही थी, डॉक्टर ने कहा कि संतोष यादव का मेडिकल अनफिट है, इसको ना ले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो डॉक्टर ने कहा, हमारी जो टीम की डॉक्टर ने कहा कि आप जानते हो कौन है? कहते हाँ, उनके लंग्स बहुत छोटे हैं, वो सांस कहाँ से लेगी? ऑलरेडी सीज क्लाइंब एवरेस्ट, और मैंने उनके साथ क्लाइंब किया है, मैंने उनकी डॉक्टर रही हूँ मैं, तो वो तो सीज बहुत ज़्यादा फिट है, वो तो, उनको कभी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। या आप क्या कह रहे हैं? तो ये तो रिसर्च का विषय है। खैर, इस विषय में हम बाद में आएंगे।
अब वापस मैं बच्चों के लिए आती हूँ, क्योंकि उनको ये फैक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ह्यूमन मैकेनिज्म क्या है और उसका फंक्शन आगे क्या है, वो हमें इस पूरे सोलर सिस्टम में क्या डिलीवर करे, उसका इफेक्ट क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से भी ये आग्रह करूँगी कि आप लोग आज जाइए घर पे या रास्ते में, जब भी आज से सोचना शुरू कीजिए, आप जो अनुसंधान कर रहे हैं और उस अनुसंधान करने के अलावा क्या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जो विज्ञान और पूरे विज्ञान को सही में जानने के लिए, मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि वायुमंडल में से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमें कुछ क्लासेस हैं, ज़रूरी है एक बंद कमरे में या बंद ऑडिटोरियम में हो, लेकिन वह हमें भय को जन्म देती है। इनफैक्ट आपको रियल माइंड में कनेक्ट करना है तो नेचर से जाके कनेक्ट कीजिए, वो कंप्लीट साइंस है। मैं मानती हूँ बायोटेक्नोलॉजी लैब का विषय है, लेकिन पूरे वायुमंडल से बड़ा लैब है ही नहीं कुछ भी। वहां जाके बैठिए तो सही, ध्यान की अवस्था क्या होती है, किसी भी चीज को बैठ के शांति से महसूस करना या कोई भी कार्य को ध्यान से करना। मैं 3 दिन से हरिद्वार में, क्योंकि वो मेरा रूटीन है, मैं सुबह जाती हूँ, वहाँ पे गंगा स्नान करती हूँ और वहाँ पर बैठ करके फिर मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, मैं देखती रहती हूँ, चंद्रमा देखती हूँ, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग जाती हूँ, मैं तारे को देख रही होती खुली आंखों से, फिर मैं विचार कर रही होती हूँ कैसे हुआ, क्या प्रकृति, क्या सृष्टि, कैसे, मतलब ये मन में प्रश्न उठते हैं मेरे। 3 दिन से मैंने वहाँ पे कावड़ के लोग, कावड़िया जो होते हैं ना, वो देखे उनको। मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार साइंस पढ़ना जरूरी है, संवेदनशीलता बहुत आवश्यक है मानव जीवन के लिए। मैंने उनको देखा, मोर देन हंड्रेड्स, वो कावड़ जो थी प्लास्टिक से भरी हुई, सजी हुई, और जो भी था वो मेरे सामने फेंक रहे हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के, उन्होंने वो गंगा जल भर के और शिवलिंग पे चढ़ाने का वो कर रहे हैं। मर गई है उनकी संवेदनशीलता, उनके अंदर का पूरा सिस्टम खत्म हो गया है। मैंने वहां पर उठी, बड़े विनम्रता से मैंने उनको, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं और उसको वहां पे डाल रहे हैं। ये तो मैंने अभी रिसेंट का दृश्य देखा। ऐसे बहुत सारी बातों को लेकर के मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूं कि भारत का ही नहीं, पूरे विश्व के समाज को हमें साइंस विज्ञान पढ़ना बहुत आवश्यक है। और भाव का अभाव हो गया है। हम भावनात्मक रूप से 2 तरह की शून्यता होती है, एक आप कहीं से कनेक्ट हो जाना, और एक ऐसी शून्यता कि हम कुछ भी किए जा रहे हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोग क्यों, हमारी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उसको संयोजन नहीं रखते, उसका महत्व नहीं कर रहे हैं। उसका महत्व करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने इस साइंस का प्रयोग किया है। मैं वो तिथि नहीं भूल सकती हूँ, 11 मई 1993 में 10 मई को मैंने एवरेस्ट दूसरी बार क्लाइंब किया था और 11 मई को मैं वापस आ रही थी। 10 मई को हम लोग वापस साउथ कॉल, जो कि एवरेस्ट का लास्ट कैंप है और बहुत ही डेंजरस जगह भी उसको कहा जाता है, वो एक बहुत हाईएस्ट ग्रेवयार्ड भी उसको कहते हैं लोग। वहीं से हमारा ऑक्सीजन लेना शुरू करते हैं और वहीं पे हमारी रात बिताते हैं, जाते समय भी और आते समय भी। अगले दिन मौसम इतना खराब हो गया कि हमारी जो टीम थी वो नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। हवा बहुत तेज चल रही थी, उनको हवा से बहुत डर लग रहा था। मुझको ये बात पता थी कि 1985 में आर्मी के 5 लोग मर गए थे और उसका कारण भी यही था कि वो डर के मारे, उस हवा की डर के मारे वो बाहर नहीं आ रहे थे टेंट से। और मुझे ये लग रहा था क्योंकि हम ऑलरेडी एवरेस्ट क्लाइंब कर चुके हैं और इन्होंने काफ़ी ऑक्सीजन इनहेल कर लिया है,
जो अभी कोविड में भी एवरेस्ट इसका क्या बोलते हैं बड़ा ही क्राइसिस था ऑक्सीजन का, और एक्चुअल में इस पर भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं अनुभव की हूँ, उस बात को बताऊंगी। ऑक्सीजन ले चुके थे और बहुत ज़्यादा ले चुके थे, और फर्दर और लेंगे तो उनके लंग्स बैठ जाएंगे। इसलिए मुझे दिख रहा था कि ये इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये अगर अभी नहीं आए तो और कमज़ोर होते चले जाएंगे, और नीचे जाने के लिए और इनको डिफ़िकल्टी होगी। मैंने काफ़ी मनाया, जब मेरी बात को नहीं माना तो मेरे पास वॉकी टॉकी सेट काम नहीं कर रहा था, और क्योंकि लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं था, तो मुझे ये लगा कि अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा और एक टीम ऊपर भेजनी पड़ेगी इनको ज़बरदस्ती निकालने के लिए, क्योंकि मैं अकेली तो नहीं निकाल सकती। मैं ऑलरेडी मेरी एनर्जी काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एनर्जी बचा हुआ था। काफ़ी बर्फ़ उठाया मैंने और उनके टेंट के सामने रखा और कहा, क्योंकि मुझे पता था कि ये जब टेंट से बाहर ही नहीं निकल रहे नीचे जाने के लिए तो कहाँ से बर्फ़ लाएंगे। इसलिए देखिए मेरी वहाँ पे उस हाइट पे इतना बुद्धि का इस्तेमाल होना, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता है, ये सब विषय पे मैं आऊँगी। तो वहाँ पर मैंने क्या किया कि उनको बर्फ़ डाल रखा उनके टेंट के सामने और कहा कि इसको बर्फ़ को पिघला करके पानी जरूर पीते रहना, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल का और कमी हो जाएगा आप लोगों को, और इसको गर्म करते पीते रहना। मैं नीचे गई तो मैंने एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, उसकी बाद मैं बात करूँगी। उसके बाद कैसे आपका रिगेन मतलब आपके हाथ में कैसे ठीक हो जाते हैं। तो मैं वहाँ से जैसे ही चली बहुत तूफान उठ गया और ज़्यादा, और मुझे हवा ने उठा के फेंक दिया। जैसे भी जिनेवा पर एक है, कभी भी किसी को नेट पे जाके देखेंगे तो वहाँ बहुत ही खतरनाक वो जगह है, और वहाँ से मैं लकली फ्रिक्शन ऑफ मूवमेंट का ही वो था, मैं एंकर हुई थी और हवा ने उनका 180 की स्पीड नापी गई थी उस दिन। और मैंने चौथा जब फॉल हुआ मेरा, तो मुझे ये लगा कि शायद अब मैं नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ जो है बिल्कुल नम की जगह अकड़ गए थे एकदम से, इस तरीके से टिश्यूज ऑलमोस्ट, मतलब पूरा सर्कुलेशन बंद हो गया था, और मुझे हवा बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पर एक ही मन में बात आई कि नहीं, तुम जिंदा हो, जब तक जिंदा हो कोशिश करो जिंदा रहने की। और उसी ने मुझे एक साइंस का यहाँ प्रयोग किया कि हवा जैसे घूम रही थी तो मैंने दाहिने तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, तो दाहिनी तरफ देखा कि वहाँ पर एक गड्ढा है, तो शायद मैं वहाँ गिराऊंगी अपने आप को। इस हवा के उससे अपनी बॉडी को मैंने मूवमेंट वैसे ही दिया और मुझे वहाँ पर मैं गिरी। डेलिब्रेट मैंने एक फॉल लिया और वहाँ पे मैंने अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस किया और कोशिश किया कि मेरे हाथों का ये सर्कुलेशन बढ़े ताकि मैं रोप को पकड़ के नीचे किसी भी तरीके से जा सकूं, क्योंकि वहाँ पे तो रोप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपको हाथ में रस्सी नहीं है तो फिर आप गए। खैर नहीं हो पा रहा था तो मैंने किसी भी तरीके से क्रॉल किया और जैसे कैसे मैं कैंप 2 पहुँची। जब कैंप 2 पहुँची तो वहाँ सबसे पहले मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि एक टीम ऊपर फटाफट भेजो, मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पर, मैं अपने आप को कर लूँगी, लेकिन एक टीम फटाफट ऊपर भेजो उनको लाने के लिए। खैर मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ और एक टीम गई वहाँ पर उनको लाने के लिए, ले आई उनको वापस। मीनवाइल डॉक्टर्स मेरे हाथों को देखने लगे। ब्रिटिश और अमेरिका के 2 टीम थी जो वहाँ रिसर्च कर रही थी, उन्होंने वहाँ पर मेरे हाथ देखे। वो लकली उस दिन वो डॉक्टर ऊपर आए हुए थे कैंप 2 में विजिट करने के लिए, तो उन्होंने जब मेरे हाथ देखे उन्होंने कहा कि ये वेरी सीरियस फर्स्ट बाइट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, आपके हाथ नहीं बचेंगे। एक यंग लड़की को ये कह दिया जाए उस हाइट पे, और जबकि आगे का रास्ता बहुत दुर्गम है और भी नीचे जाने का, जितना दुर्गम ऊपर जाना होता है ना उतना ही नीचे आना और डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ पर मैंने उनको कहा कि उनकी बात सुनी, पर मेरे अंदर की मन ने ये कहा, भोले से मन ने, उसको मैंने, उस विश्वास को मैंने भगवान भी कहा है कि नहीं मेरे हाथ बच जाएंगे। इतना सा मुझे कहना था, सिर्फ इतना सा बात। सकारात्मकता की क्या वैल्यू है, उस सिस्टम को मैंने कैसे पूरा अनुभव किया है, वो आपके सामने मैं आज रख रही हूँ। इतनी सी बात कहनी थी मैंने, और इमीडिएटली मुझे एक
मेरे टीचर की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि जब हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जो होती है उसका सबसे बेस्ट मेडिसिन इज टू कम डाउन, और मुझे वही लिंक क्लिक किया कि नहीं, मुझे नीचे जाना है। तो सबने कहा कि तुम्हारी हालत इतनी खराब है और तुम नीचे नहीं जा सकती। मेरे शूज़ वगैरह निकालने लगे, बिस्तर लगा, नहीं 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 नहीं, मैं नीचे जाऊंगी। और नीचे जाना का वो सही कह रहे थे। मोर देन 100 लेडर्स क्रॉस करने हैं मुझे, क्रवासिस, बर्फ की चौड़ी चौड़ी दरारें, कोई 20 फीट का है, कोई 10 फुट का है, कोई 5 फुट का, कोई 25 फुट का भी है। अब उन लेडर्स को पार करना, क्योंकि रस्सी और उसकी चौड़ाई है 1 फुट, लंबाई तो 20 फुट 15 फुट, कोई अलग अलग लेंथ के थे। अब उसको मेरे हाथ ही काम नहीं कर रहे, तो मैं रस्सी पकड़ूंगी कैसे? कोई दूसरा मुझे मदद भी नहीं कर सकता। यहाँ पे हेलीकॉप्टर मुझे वहां से उठा नहीं सकता है। ये सारी सिचुएशन मेरे सामने थी। खैर, मैंने किसी भी हिम्मत करके क्योंकि जब आप सकारात्मकता की ओर चले जाते हैं तो आपका निर्णय सही हो जाने लगता है, आपको बुद्धि काम करने लगती है। तो मेरा बुद्धि ने काम किया कि मैंने एल्बो को इस्तेमाल करना शुरू किया, और वहाँ रिदम की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा पैर गड़बड़ाया तो वहाँ पर फिर मैं गिर सकती, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता। फिर वहाँ एक बार गिरना मतलब काफ़ी एनर्जी वेस्ट करना, अपने आप को वापस उस सिस्टम में लाना। खैर, मैं वो सारे पार कर पाई, और पार करने के बाद बेस कैम्प में पहुंची तो बेस कैम्प में डॉक्टर रीटा पटेल ने कहा तुम्हारे हाथ की बहुत बुरी कंडीशन है, ये हाथ नहीं बचेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे, सिर्फ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू कीजिए और मैं सवेरे नीचे जाऊंगी, 5-6 घंटा रेस्ट करूंगी और नीचे जाऊंगी। कहती नहीं, हेलीकॉप्टर मंगा देते। मैंने कहा नहीं, मैं हेलीकॉप्टर का इंतजार नहीं करूंगी। कल सवेरे मौसम खराब हो गया तो मेरे पास जो समय है, मेरे अपने पैरों पर विश्वास है। अब आगे की क्लाइंबिंग तो टेक्निकल नहीं है, और मैं जब टेक्निकल क्लाइंबिंग कितना पार करके आ गई हूँ तो मैं 5-6 घंटा यहाँ रेस्ट करूँगी। लगभग मैंने रात्रि के 1:30 बजे उठी, और 5-10 मिनट में, मतलब 2 बजे से पहले मैं वहाँ से रवाना हो गई। 4 दिन का रास्ता मैं 23 घंटे लगातार मैं चलती रही। किसके सहारे? एक विश्वास के सहारे, और वो विश्वास था कि मेरे हाथ बच जाएंगे। और उस विश्वास ने ही मुझे एक सही निर्णय लेने के लिए दिशा दी। वो था कि हेलीकॉप्टर को नहीं ले आना है। उस वक्त मुझे उसका पता नहीं था। उस वक्त तो मेरा माइंड यही कह रहा था कि टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे जाना है, क्योंकि एक दिन वेस्ट हो जाएगा मेरा पूरा, क्योंकि वहाँ रात को क्लाइंबिंग, रात को चलना उचित नहीं माना जाता है। खैर, मैंने वहाँ से, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्यों नहीं बचा था मेरे हाथ, मेरा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, वो 6 घंटा जो चली मैं, कैंप 2 से बेस कैंप आई, और फर्दर कुछ ही घंटे रेस्ट करके, और वो जो बेसिक ट्रीटमेंट जो फर्स्ट एड लिया, गर्म पानी में हाथ किया, और जो भी है कुछ मेडिसिन खाई ताकि मेरा ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा होए। ऐसे भी अगर आप बहुत शांत है और बहुत ही टेम्परामेंट बैलेंस है तो अपना ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त स्टेबलाइजर है। तो टेम्परामेंट जो बैलेंस रहना, ये एक बीपी के लिए बहुत अच्छा वो है। तो खैर, वहाँ से फिर हम 23 घंटे में लगातार चलती रही। लगभग 9 बजे के करीब, 8-9 बजे करीब, मैं ट्री लाइन तो नहीं, थोड़ा बुशिस जहाँ पर है, ग्रास लाइन पे पहुँची। उसके बाद ट्री लाइन पे मैं 11-12 बजे करीब पहुँची, और उस वक्त मेरे हाथ में जो दर्द होना शुरू हुआ है, तेज धूप चल रही थी, इतना तेज दर्द कि मैंने 2 बच्चों को भी जन्म दिया है, वो लेबर पेन से भी ज़्यादा दर्द था मुझे। पर मेरे खुशी के आंसू आने लगे कि मेरे हाथ बच जाएंगे, और मैंने फर्दर लगातार चलती रही, क्योंकि मुझे अब ये महसूस होने लगा कि मैं अपना फ्लाइट लूँगी वहाँ से, तो मैं काठमांडू पहुँचूँगी तो और गर्म एरिया रहेगा वहाँ पे, तो और मेरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा और मैं ठीक से कर पाऊँगी। और आज मेरे हाथ जो है 10 उंगलियों के साथ में है। अब यहाँ पर एक बात आती है, जापान में एक कार्यक्रम हुआ 1995 में। हम पूरे भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के माउंटेनियर्स वहाँ इकट्ठे हुए, और वो 2 डॉक्टर्स भी आए हुए। तो उन्होंने कहा मुझे देख करके, संतोष, इट्स द सेम हैंड। आई से यस, इट्स अ मिरेकल, वी कांट बिलीव इट। वो मेरे हाथों को देख रहे बार बार ऐसे छू करके। उसके बाद उन्होंने फटाफट वो कुछ मशीनें ले आए, ये तो रिसर्च का विषय है।
जो आज ऑक्सीमीटर की जो हम बात करते हैं, वो उन्होंने उस 95 में मेरे हाथों में पूरा कहीं कहीं लगा रहे हैं पूरा। तो कैसे हुआ? अब मैं उनको क्या बताती, मुझे समझ में आ रहा था ये हुआ क्यों। आज वही डॉक्टरों ने कहा मेरे लंग्स इतने छोटे हैं, उन्होंने पाया कि मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन सबसे बेस्ट है। जितने भी माउंटेनियर वहां थे, सबका ऑक्सीजन सैचुरेशन नापा गया, और among all the world mountaineers, my oxygen saturation found the best. तो ये कंट्राडिक्टरी कितना बड़ा है कि मेरे लंग्स छोटे थे। अब उसके लिए जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको साझा करती हूँ। सबसे पहले तो मैं बचपन से ही सुबह जल्दी उठती थी। मेरे माता पिता का दिया हुआ संस्कार, वो लोग भी 3:30-4 बजे करीब उठ जाते थे। तो मैं कभी भी उनको उठने से पहले मेरा उठने का हमेशा एक निर्णय होता था कि नहीं नहीं नहीं, वो उठ गए तो मैं उसके बाद उठी, तो एक सम्मान की बात है। मेरे माता पिता का सम्मान उसी में होता है जब मैं उनके साथ या उनसे पहले उठ जाऊं। ये अंदर से मन में एक भाव था मेरे पिताजी का गले के हार रही हूँ, तो मैं हमेशा मेरे पिताजी के लिए एक वो करती थी। खैर, कॉलेज में गई, हॉस्टल में रही। हॉस्टल में बाकी की लड़कियां तो 2 बजे तो सोने ही जाती थी। हमने अपनी हैबिट को यहाँ पे चेंज नहीं किया। यहाँ पे भी हमने सवेरे बल्कि और जल्दी उठना शुरू किया। 3 बजे हम उठ जाते थे, और आज भी वह हैबिट को मैंने कंटिन्यू किया। पहाड़ों में क्या होता है कि आपको जल्दी ही उठना पड़ेगा, आपको जल्दी ही क्लाइंब करना पड़ेगा। इसलिए वो डॉक्टरों के कहने के बावजूद भी हम वहाँ फिट पाए गए, क्योंकि वो मेरी हैबिट में था, नंबर 1। नंबर 2, हम जब सवेरे जल्दी उठते हैं तो हमारे लंग्स बहुत एक्टिव होते हैं एक्चुअली, और उस वक्त का वायुमंडल, उस वक्त की जो एयर होती है वो बहुत ही शुद्ध होती है। तो उस वक्त हमारा मैक्सिमम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं एक्चुअली हम, नंबर 1। नंबर 2, टेम्परामेंट अगर आपका सही है तो आपका ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, तो आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा। तीसरी बात, मैं लहसुन प्याज अदरक बचपन से नहीं खाती थी। बीच में मैंने ग्रहण किया इसको, लेकिन मैं ना के बराबर। मैं ज़्यादातर फ्रूट्स पे मुझे बहुत पसंद है, पर वहाँ पहाड़ों में तो कहाँ फ्रूट्स। पर मैं फिर भी वहाँ पे भी कोशिश करती थी कि मेरा बॉयल। अब लहसुन प्याज अदरक को लोगों ने अध्यात्म से जोड़ दिया, वो है, उसकी एक अलग विषय है, पर यहाँ साइंटिफिक है। क्योंकि जब हमारा लहसुन प्याज अदरक हम ग्रहण करते हैं तो हमारा जिस विधि से हम ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे पेट में गैस और एसिडिटी बनने लगती है। क्योंकि कभी भी अदरक को, वही अदरक यदि आप पका के खाएंगे तो गैस बनता है उससे, और वो पाइल्स के लिए जहर है, कॉन्स्टिपेशन करती है एक्चुअली। यदि उसी अदरक को, जैसे चाय की अदरक, चाय वाली अदरक वाली चाय है, लोग बड़े चाव से पीते हैं, आपको पता नहीं है आप लोगों को वो कॉन्स्टिपेशन कर रही होती है एक्चुअली। उसी तरीके से लहसुन प्याज ये दोनों ही चीज़ गैस करते हैं अगर उसको पका के लेते हैं। ये एक औषधि है, मेरे ख्याल से इसको एक औषधि के रूप में ही इसको ग्रहण करना चाहिए। औषधि को रोजाना नहीं लिया जाता। तो आप जब गैस होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे उसमें तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ये ही साइंस है। साइंस का पढ़ने का फायदा ये है, एक तो साइंस पढ़ना, एक साइंस पढ़ करके उसको प्रैक्टिस करना। हम कितने लोग हैं, वो हमारे जो 5 तत्वों का जो एलिमेंट से ये बॉडी बना है, इस शरीर को उस शुद्धता की ओर ले जाना, वो 5 एलिमेंट्स को शुद्ध करना हमें। कहते हैं ना, जैसी वायु वैसी आयु। क्या हमें बहुत जरूरी है कि पटाखे छुड़ाना? मैं कोशिश करती हूँ, मैं क्षमा चाहूंगी, आज मुझे किसी विशेष परिस्थिति के कारण मुझे कार लेके आना पड़ा मुझे, नहीं तो मैं संजय जी से कह रही थी कि मैं ट्रेन से चलती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं ट्रेन इस्तेमाल करूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूँ। तो अब पटाखे, क्या हम आवश्यकता में नहीं जी सकते हैं? आप रोजाना सोचिए, चाहे कितना भी बड़ा कोविड आ जाए, बीमारी का आप लोगों का जो सदुपयोग होना चाहिए वो बीमारी के लिए, ठीक करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि और एक मानव विकास के लिए होना चाहिए। मानव का ये, उसकी क्या एक
प्रकाष्ठा है, उसका क्या महत्व है। और मेरा ये सपना है, मैं आप लोगों के सामने अपनी खुली आंखों से देख रही हूं सपना, और देखती रहूंगी। और रोजाना जो सुबह जल्दी उठ करके एक ही सपना देखती हूं कि जितने भी हॉस्पिटल है, इट शुड बी कन्वर्ट इनटू मेडिटेशन सेंटर। ये बहुत जरूरी है। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, हम कितनी भी दवाई कर ले, कोई फंक्शन नहीं करेगी। आप जितने भी ड्रग्स निकाल लीजिए, आप जब तक व्यवहार से भय से मुक्त हैं, और भय से मुक्त कभी हो सकते हैं जब हम आवश्यकता में जीते हैं, आपकी एनर्जी बचती है, आपका पैसा बचता है, आपका एनवायरनमेंट बहुत सुरक्षित हो जाता है। मैं एक ही उदाहरण दे दूंगी, बाकी तो बहुत अपने आप लिस्ट बना लीजिएगा। टूथपेस्ट, आंख बंद करके एक बार सोच लीजिए कि मिलियंस पीपल एवरी डे एवरी मंथ वी आर थ्रोइंग 1 टूथपेस्ट ट्यूब। अगर वो हमारी जरूरत की होती तो भी हम सोचते, एक्चुअल में उसको टूथपेस्ट को इस्तेमाल करने से हमारे सलाइवा, जो कि 75% हमें सुरक्षित रखती है, स्वस्थ रखती है, उसको वो ड्राई कर देती है। और वह सलाइवा जो है वो डिसइंफेक्ट करती है, तो आप लोगों को पता है, डाइजेस्ट करती है भोजन। सो इम्पोर्टेंट। और उसको हम टूथपेस्ट से, अब मेरे दांत मेरे ख्याल से सबको साफ ही लग रहे होंगे, ना स्मेल आती है। और मैं सप्ताह में 2 बार 3 बार याद आ जाता तो नींबू घिस लेती हूँ, और उसी नींबू को घिसने के बाद उसको चबा लेती हूँ। नीम की दातुन तो मैं आप लोगों को वो भी ऑप्शन छोड़ रही हूँ, क्योंकि कह देंगे कि वही कौन लेके आएगा, नींबू की दातुन कहाँ मिलेगी मैम, शहर में क्या है। पर एक और मैंने उसका साधन ढूंढ लिया है। नींबू के छिलके को आप ज़्यादा खट्टा लगता है उसको धो लीजिए, उसके बाद उसको घिसिए, घिसने के बाद उसको चबा लीजिए, ताकि वो आपके दांतों में अच्छी तरह से उसका रस चला जाए। एंटीबैक्टीरियल होता है। कहीं जाएंगे आप फटाफट एक पॉच तैयार करेंगे, साबुन तेल, मैं कुछ नहीं लेती हूँ। मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, अब मैं पानी में इटसेल्फ साफ करने की कैपेसिटी होती है, पता आपको, सिर्फ अपने आप को सही से रगड़ के जाए। तो इसी तरीके से आप लोग स्वयं डिसाइड कीजिए कितनी अनावश्यक चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वह हमारी जो जागरूकता है, हमारी एक्चुअल में हमें उससे दूर ले चली जाती है। मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक बात और, स्नीजिंग की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। कफ, कोविड का वही तो था। अब इसमें हमने एक ही छोटा सा उदाहरण दिया कि भैया आप जीरा पानी पी लीजिए बॉईल करके। चाय पीना जरूरी है? चाय तो डिहाइड्रेट करती है। हमें पहाड़ों में, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, माउंटेन में चाय कॉफी धड़ाधड़ से पूरा आर्मी को दिया जा रहा है। जितने भी हमारे फॉरवर्ड पोस्ट्स पे, मैं खुद पुलिस अधिकारी रही हूँ, मेरे वहाँ पे कॉफ़ी चाय इतना सारा दिया जाता है, मुझे नहीं चाहिए। मैं चाय ना कॉफ़ी पीती हूँ, कुछ नहीं पीती हूँ, क्यों? डिहाइड्रेट करती है वो, और ऊपर से वहाँ पे डिहाइड्रेशन वैसे ही है। मुझे समझ में नहीं आया ये बात। जीरा पानी आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही करती है, क्योंकि वो ब्लड को थिन कर देती है। डर से हमारे शरीर में खून गाढ़ा हो जाता है। जब भी आप एंजाइटी हो, जब भी कुछ ऐसी दिक्कत हो, तो आप फटाफट जीरा को बॉईल किया और पिया, फर्स्ट क्लास। लोगों का 15 मिनट 20 मिनट में ऑक्सीजन लेवल जो 75 था 95 100 हो गया, वेंटिलेटर उतर गया लोगों का। दूसरा, हमने कहा कि हमारा जो यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, उसके बाद जनरली सुबह तो वही मजबूरी होती है कि हमें दातुन वो मंजन करना होता है, लेकिन उसके बाद अगर हम यूरिन पास करते तो हम कभी भी कुल्ला नहीं करते जनरली। और वो कुल्ला करना इतना जरूरी है क्योंकि जो सलाइवा हमारी प्रोटेक्टेड है, वो उस वक्त सलाइवा ठीक नहीं होती उस वक्त की, क्योंकि हमारे जितने भी जर्म्स जो अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उनका जो भोजन है वो तो निकल जाता है बाहर, वो ट्रैवल करते ऊपर और आके सलाइवा में वो चिपक जाता है। वो सलाइवा हमें उसी वक्त उसको निकाल करके कुल्ला करके फेंक देनी चाहिए।
और वही सलाइवा है, उसी के कारण हमारा जितने भी जुकाम खांसी जो होती है वो कारण होता है। खैर, भाव तो है ही है, व्यवहार तो है ही है, व्यवहार में तो वो तो है ही, बाकी की और भी जो एडिशनल चीजें हैं, तो ये हमें साइंस है एक्चुअली, इसको हमें प्रैक्टिस करना है। और साइंस का एक और बहुत सुंदर सा रूप है, वो है कि साइंस के लोग बहुत जल्दी अध्यात्म को समझते हैं, वो ध्यान को समझते हैं, क्योंकि वह उनकी समर्पण भाव होता है, उनके अंदर एक सरेंडरनेस होती है। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं बड़े बड़े ही सधे लोग होते हैं एक्चुअली। यदि मैंने एवरेस्ट को या माउंटेनियर एज ए अवार्ड या एज ए नेम फेम के लिए होती, तो मैं शायद आपके समक्ष ये बात नहीं कर रही होती। आप लोगों ने तो मुझे, संजय जी ने बुलाया कि मैं एक साइंस से हट के मैं हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे आऊँ और बात करूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि महादेव मुझे भेज रहा है, ये तो बुलाने वाले हैं, भेज तो मुझे परमात्मा रहा था कि तुम्हें वहाँ साइंस को लाके मोटिवेट करना है और जाकर के कि साइंस का महत्व है क्या। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक विनती करती हूँ कि आप लोग आज से, अब से ये बात सोचना शुरू कर दीजिए कि भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का कैसे पैसा बचाया जाए, कैसे एनवायरनमेंट को सुरक्षित किया, कैसे आपकी अपनी ऊर्जा को बचाना है। क्योंकि इसको मैंने आज नहीं कह रही हूँ, मैं इसको मैंने प्रैक्टिस किया है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मैं छोटी बच्ची थी। आई कम फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिली, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। पैदा हुई थी तो कार और ट्रैक्टर हुआ था, फिर भी मैं बस से जाती थी, सरकारी बस से। उसके अलावा मेरे पास सिर्फ 2 मात्र ड्रेस थी जो मैं लेके गई हॉस्टल। तीसरा ड्रेस मुझे सब सर्दियों में खरीदना पड़ा कि बारिश होगी तो मुझे लगा अब ये सूखा हुआ नहीं होगा, क्योंकि मुझे एवरीडे चाहे साबुन ना लगाऊं, पानी में से जरूर निकालती थी। दिस इज साइंस, क्योंकि अगर एक बार पानी से निकाल दिया तो उसकी एक शुद्धता होती है। अब हम कितने भी कपड़े आप लोगों ने पहने हुए, मैं क्षमा चाहूंगी, मैं उसी पर वापस आ रही हूँ 5 तत्वों पे। वायु की शुद्धता, भोजन की शुद्धता, इस शरीर में जो डालेंगे बाहर आएगा। वस्त्र की शुद्धता, हाँ, हमारा जो भी आकाश की शुद्धता, हम जो भी वाणी, जो भी शब्द कहते हैं, वो सबसे पहले हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। वो आकाश तत्व को कैसे मजबूत करेगा, यह हमें जानना जरूरी है। हम एंग्जाइटी होंगे, हम क्रोध करेंगे, हमारे सामने बहुत समस्या आएंगी, उससे हम हताहत हो जाएंगे। तो वैसे ही हमारा ये सारा सिस्टम जो है ना, बहुत ज़्यादा अशुद्धता की ओर चला जाता है। हम वस्त्र जो पहनते हैं, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें हमारा फ्लो हो, एनर्जी का फ्लो हो। आप लोग इतने टाइट कपड़े पहन लेते हैं कि हमारी एनर्जी बंद के रह जाती है। अब स्कूल के बच्चों को देख लीजिए, उनका पेट, बेल्ट, इतने छोटे बच्चों को, उनकी ग्रोथ को रोक रहे हैं हम लोग। उसको वो कहा है, क्यों एंग्जाइटी में है? माँ बाप परेशान, टीचर्स परेशान, उनको पता ही नहीं हमारे बच्चे क्यों एंग्जाइटी। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते, आजकल के बच्चे ऐसे नहीं होते। ये हम माँ बाप और हम शिक्षकगण उनको वो दे रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए, वो नहीं दे रहे। मैं क्षमा चाहूंगी, जितने भी लोग यहाँ पर एक पैर पे पैर रखे बैठे हुए हैं, वो कृपया जितना जल्दी हो सके इस आदत को सुधार ले, क्योंकि ये भी आपको एक बहुत बड़ी समस्या में ले जाएगा। क्योंकि इसका भी देखिए साइंस है इसके पीछे, क्योंकि जितने भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको रोक रहा है, और जहां ब्लड सर्कुलेशन रुका वो नाभि के साथ में सारा उसका जुड़ाव है। इंडाइजेशन हो जाएगा, जब इंडाइजेशन हो गया तो क्या होगा? हार्ट की प्रॉब्लम, उसके बाद पूरा रीढ़ की हड्डी आपका इफेक्ट। तो साइंस तो आप जानते हैं, मैं तो थोड़ा बहुत, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ी हूँ, पर मैं अनुभव की हूँ। मिनिस्टर साहब सही बोल गए कि मैं पीएचडी कर ली तो फिर अब मुझे नहीं बुलाते। अच्छा कोई हो, मैंने पीएचडी नहीं किया है ना। तो ये सारी चीजें हमें इस महत्व को समझना होगा कि इस शरीर का मकसद क्या है, इस शरीर क्या है। यही एक मंदिर है, इसको जितना सुंदर और सुरक्षित बना के रखेंगे, हम पूरे समाज में वही सही डिलीवर करेंगे। सारी समाज की समस्या खत्म। और मेरे पास इतनी ऊर्जा होती थी, लड़कियां मेरे कमरे में आकर के हॉस्टल में बैठ जाती थी, कहती यहाँ बड़ी ऊर्जा महसूस होती है। अब उनको ये नहीं पता होता, तो उनका कमरा तो पूरा हॉस्टल में क्या लिपस्टिक को क्या क्या इतने सारे सामान होते थे उनके पास। ऐसा नहीं है कि लड़कों के पास भी बहुत होते हैं, अलग अलग डीओ, तो ये तो वो, पता नहीं क्या क्या परफ्यूम, क्या क्या क्रीम। हाँ, इट्स नॉट की ओनली वुमेन। क्या इसकी आवश्यकता है? हम लहसुन, प्याज, अदरक खाते हैं या कोई भी ऐसी चीज लेते हैं जिससे शरीर में गंध होता है,
फिर एक और अनावश्यक चीज को जन्म दे देते, वो है परफ्यूम। सचमुच इसकी आवश्यकता नहीं है, हम एक और बोतल को जन्म दे रहे हैं। मैं मार्केट से कोई भी चीज लाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कंपनी मेड ना हो। मैं क्षमा चाहूंगी, जितने भी लोग हैं वह कंपनियां, व्यापार लोगों से मैं सचमुच, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ी हूँ, लेकिन मैं विनती करूंगी कि वह अपनी चीज को एक इतना ज्यादा क्या ऐड देते रहते हैं। तो हमने एक गलत एक्शन को जन्म दे दिया। हमने जैसे ही पैकेट की चीजें खरीदी, कभी कभी मजबूरी मुझे भी खरीदनी पड़ती है, मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन कि मैं ये ना खरीदूं, मुझे ये नहीं लेनी चाहिए। तो वो चीज हमारा ये, वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज आवर एक्शन। क्या हमारा सही काम? हम सोचते हैं नहीं, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने किसी को हर्ट नहीं किया, हमने झूठ नहीं बोला, हमने कोई चोरी नहीं की। यही कर्म नहीं है। आप कर्मों की लिस्ट बना लीजिए, हमारे अपने शरीर के साथ में भी क्या कर रहे हैं, है ना? तो एक आनंद की स्थिति में पहुंचने के लिए हमें साइंस का प्रयोग करना चाहिए। साइंस का सही रूप में प्रयोग करना ही आनंद की स्थिति में जाना है एक्चुअली। मेरे ख्याल से मैंने बहुत देर हो गई आप लोगों को बैठे हुए। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर किसी का मन में प्रश्न है, कुछ बात पूछनी है, तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, कई समय लग जाएगा कहने के लिए, लेकिन बस यही मैं आग्रह करूंगी, इन 5 तत्वों को संभाल के रखें, है? क्योंकि मैं एक बता रहे थे कि बच्चा का जन्म होने के बाद हम क्या, बच्चा को जन्म होने के बाद नहीं सोचना है, बच्चा गर्भ में आए उससे पहले की तैयारी करनी है। तब सब पूरा जीवन सुखाल है, खुशहाल है, कोई दिक्कत ही नहीं हो। पर हम उससे पहले तैयारी नहीं करते, क्योंकि अगर हम आईआईटी के लोगों ने मुझे कहा था, बॉम्बे आईआईटी में, कि मैम क्या ये हम क्या कुछ बताया उन्होंने कि हम जेनेटिक कुछ ऐसे, मैं कुछ नहीं करोगे, करेला बोया तो करेला ही होगा, आम बोया तो आम ही होगा। अब यू कांट डू दिस। नेचर के साथ खूब खिलवाड़ हुआ, मैंने कहा इसके साथ हो ही नहीं सकता खिलवाड़। जैसे भाव होंगे वैसे हमारे बच्चे होंगे, और बच्चे होने के बावजूद हमें उन खरपतवारों से बचाना है जो समाज में अनेक है। पर उस खरपतवार को भी हमें तभी हम मिटेगी जब हम सब साझा मिल करके, सब एक जैसे। आप खुद देखिए, आपने विभिन्न कपड़े पहने हुए हैं या कलर पहने हुए हैं, यदि आप एक जैसा पहनेंगे तो आपकी ऊर्जा को बहुत ऊर्जा मिलेगी आपको। मुझे याद है अभी भी, मैं एक गुजरात में एक जगह है, कलर फैक्ट्री वहाँ पर है, तो मैं गई, वहाँ पे मुझे बुलाया गया, तो मैंने देखा बहुत घने जंगल है वहाँ पे, एक कैंपस में इतना भारी डेंस फॉरेस्ट, क्या है? मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा मैम ये कलर फैक्ट्री है ना। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा यहाँ कैंसर होने के लोगों को चांसेस है, इसलिए हम लोगों ने, मैं अपने कमरे में गई, बैठ के ही सोचने लगी कि हम एक अपने अच्छा लगने के लिए हमने एक केमिकल को, वो भी लोगों को कैंसरियस है, उसको जन्म दिया। मैं हिल गई थी, मेरा भीतर का सारा सिस्टम हिल गया था। इनफैक्ट हमें उस संवेदनशीलता की ओर जाना होगा। ये 2.5 अक्षर का सत्य, उसकी ओर बढ़ना होगा। जब हम 2.5 अक्षर के सत्य को जान लेंगे तो हम उस 2.5 अक्षर को, प्रेम को भी जान लेंगे। जब हम 2.5 अक्षर के प्रेम को जान लेंगे, इस 2.5 अक्षर का शरीर जो है उसको भी हम जान लेंगे, और पूरी दुनिया यहीं पर आनंदित हो जाएगी, सही रूप में अगर हम जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अगर आपके सवाल है, मन में कुछ बात है, 2.5 अक्षर के शरीर को समझ तो गए ना, जीभ भी 2.5 अक्षर की। अगर इसके ऊपर संयम है, इसके 2 बड़े काम हैं, स्वाद और शब्द बोलना, दोनों पे अगर संयम है तो जीवन बड़ा आनंदित है। हाँ? जितने भी लोगों ने टाई लगा रखी, इसकी आवश्यकता है क्या? इतनी गर्मी हो रही है। प्लीज, मैंने नवोदय विद्यालय स्कूल है,
वहाँ पर 50 रुपये एवरी मंथ टूथपेस्ट के लिए दिया जाता है। वो गांव में स्कूल है उनका कैंपस, और वहाँ पर इतने पेड़ लगाए हुए उन्होंने। हमने नहीं है तो और लगाइए, दातुन करवाइए। मैं नींबू का छिलका, नींबू आता है? हाँ मैडम आता है। तो मैं उसको फेंकते क्यों? मैं कभी भी नींबू का छिलका को कूड़े में नहीं फेंकती, उसका अचार डालती हूँ, या फिर दांतें साफ करते जो बच जाता है अचार डाल देती हूँ। अचार मतलब एवरीडे कांच का बर्तन लिया, ये नहीं कि मुझे स्पेशल टाइम देना पड़ता, नहीं, खाली एक कूड़ादान में की जगह मैंने उस कांच के जार में डालती हूँ, उसमें नमक और अजवाइन पहले से डाल के रख देती हूँ। बस इतनी तो फर्क है। वो अपना इतना अच्छा डाइजेस्टिंग सिस्टम रखता है, और उसका मैंने हिसाब लगवाया। आपको पता है अराउंड 20 करोड़ रुपीज इज स्पेंडिंग ऑन टूथपेस्ट। यू ऑल आर स्पेंडिंग दैट मनी जस्ट टू फॉर योर अनहेल्दीनेस। कैन यू इमेजिन? वही नहीं, फिर मैंने हिसाब लगवाया। मैंने कहा लहसुन प्याज अदरक कितना है बच्चे, कितना खर्च होता है? अराउंड 50 to 54 करोड़ रुपीज एवरी ईयर स्पेंडिंग ऑन दैट। और जिससे कि हमारे बच्चों की एक्शन स्लो होता है। आपको पता है, क्योंकि जब हम लहसुन प्याज अदरक को पका के लेते हैं तो जिसमें मैंने बताया ना कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आपका गैस बनेगी, तो गैस जहाँ बनेगी तो ऑक्सीजन कम होगा, तो बच्चों को वैसे ही एक्शन स्लो। ऐसे ही हम ऋषि मुनि लोग नहीं खाते थे। क्यों नहीं खाते थे? इसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों को हमने एक बड़े बंद बस्ते में डाल दिया। सोचते वो तो नहीं, वो अध्यात्म है। ऐसा नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम में होते थे। हम लोग सब लोग, मैं भी तो गृहस्थ आश्रम में हूँ। बस ये है कि हमारी समझ को, हम जो साइंस पढ़ा है उसको प्रैक्टिस भी करना है, उसके सारे वो देखने हैं कि सही क्या है गलत क्या। हम कोई भी चीज़ प्रयोग करने से पहले अपने शरीर पे, चाहे वस्त्र के रूप में करें, और चाहे भोजन के रूप में करें, चाहे वाणी के रूप में करें, और चाहे हम एयर हम लोग लेते हैं, वो सारा का सारा हमें ये देखना होगा कि हम सही कर रहे हैं, और हम क्या नेचर के साथ, इस पृथ्वी के साथ हम सही कर रहे हैं। खैर बहुत सारी बातें मैं कोशिश करती हूँ कि वाइंड अप करने की। हाँ जी, हाँ 5 मिनट तो नहीं, मैं टाइम नहीं है ना। कोई और भी क्वेश्चन? सिर्फ एक लाइन में जो बोलना है। मेरी अगर बड़ाई में, प्रशंसा में बोलना तो मत बोलिएगा। महादेव। जी 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 जी, हाँ आई प्लीज। मेरे ख्याल से कोशिश कीजिएगा एक लाइन में इसको जल्दी से, है ना। यहीं से बोल दो, यहीं पे बोल दो। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। माताजी ने जो बोला मुझे जो समझ में आया, और मेरा भी अनुभव यही है कि देखिए ऋषि और मुनि, ऋषि मीन्स रिसर्च स्कॉलर, और मुनि जो है आध्यात्म का ज्ञानी। और जो समदर्शी होगा वो अनुचित कभी नहीं होगा, वो समदर्शी है, वही ज्ञानी जो बता सकता है। तो मैं उसी संदर्भ में माताजी ने जो बताया, जो 5 तत्व हैं वही हमारे अंदर आके और वही बाहर, कभी जैविक और अजैविक, तो बाह्य और आंतरिक। तो मैं उन शब्दों को बोलूं, अगर ईश्वर का ध्यान करके कहा जाए तो मैं क्या बोलना चाहूंगा? आंखें बंद कर लूं तो उसको देखूं, आंखें बंद कर लूं तो उस रब को देखूं, आंख जो खुले तो उसके जग को देखूं, आंखें बंद कर लूं तो उस रब को देखूं, आंख जो खुले तो उसके जग को देखूं। कितना मधुर पल है, कैसा एहसास है, कितना मधुर पल है, कैसा एहसास है, वो ही सबसे खास है, वो ही सबसे खास है, वो ही अग्नि पानी वही हवा श्वास है, वो ही अग्नि पानी वही हवा श्वास है। क्या बताऊं यारो वो कितना खास है, क्या बताऊं यारो वो कितना खास है। आंखें बंद कर लूं तो उस रब को देखूं, आंख जो खुले तो उसके जग को देखूं। कितना मधुर पल है, ऐसा एहसास है, क्या बताऊं यारो वो कितना खास है, क्या बताऊं यारो वो कितना खास है। अब देखिए
माताजी ने बताया वो पंच तत्व, मगर जीव विज्ञान के वैज्ञानिक होते हैं नाते पांच तत्व ही कैसे हमारे अंदर पांच भावों को जागृत करते हैं, जिनके साथ हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। आकाश धरती आग हवा पानी, कहते हैं इससे बनी ब्रह्मांड की ये निशानी। आग आकाश धरती आग हवा पानी, कहते हैं इनसे मिले बन के ब्रह्मांड की ये निशानी। इसी तरह काम क्रोध लोभ मोह अहम से मिलके बनी ब्रह्म रूप जीव की निशानी। तभी तो कहा गया है वेदों में, तभी तो कहा गया है वेदों में, वो जितना दूर उतना ही वो पास पास है। क्या बताऊं यारो वो कितना खास है, क्या बताऊं यारो वो कितना खास है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जो माताजी ने जो कहा हमें उसको अध्यात्म रूप में जानना दीक्षित। सुंदर, इन्होंने बहुत अच्छा और संगीत में है कितना रिदम आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो ऊपर वाला मतलब हमारा आकाश तत्व है ना, वो संगीत है। हाँ? तो और कोई किसी का सवाल है? 11 मई को मैं वापस आ रही तो मैं जिंदा मेरे हाथों के साथ में नहीं 12 मई को पहली बार और विद इन 1 ईयर हुआ था। और देखिए मैंने जब कहा ना एवरी एक्शन है प्रारब्ध पहले भयो जन्म पाछे, वो हमने हिंदी में जिस मतलब अवध भाषा में बोल दिया, तो वह चीज़ वही है कि मैंने तो कर्म तो किया था ना, चाहे मैं अच्छे भाव के लिए कर रही थी, अपने साथियों को बचाने के लिए कर रही थी, लेकिन एक्शन तो किया था ना। हाँ वो अलग अलग, नहीं तो ये एक्शन तो किया मैंने, लेकिन भाव मेरे कैसे थे उसने मेरे बचाया। ये मिरेकल है एक्चुअली। नहीं तो एक बार कोई चीज़ डेड हो जाना और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन उसको रिवाइव करना, इट्स ये बहुत अपने आप में बड़ी है जी। बस कोई तो हाँ जी बताएं। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, बीच में और भी लोग क्लाइम किए हैं। और मैंने क्या कहा, प्रारब्ध पहले भयो जन्म पाछे, है ना। और इसमें अगर हम लोग कहीं वुमेन को ये नहीं, देखिए ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी। अक्सर लोग इस बात को कहते हैं कि वुमेन को ये नहीं मिला, वुमेन को वो नहीं मिला। मैं एक बात कहना चाहूँगी, देखिए प्रकृति ने जो हमें महिला की जो एक रूपरेखा जो तैयार की है, वैसे पुरुष की रूपरेखा तैयार की है। सबका अपना अपना दायरा और अपना अपना स्थान बनाया है उसको क्रियान्वित करने के लिए। माँ का क्या कर्तव्य है, एक महिला का क्या कर्तव्य है, एक इस प्रकृति के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और वो सही कहीं सटीक है इनफैक्ट। और इसीलिए उस तालमेल को बनाए रखने के लिए परसों मैं वहाँ से मसूरी से आ रही थी, तो क्योंकि हम गए थे तो मेरे हस्बैंड फिर वापस मुझे छोड़ने आए, तो मैंने कहा नहीं मैं ना, मुझे बस मिली और मैं उसमें चढ़ गई। तो उसमें मुझे 3 लड़कियों से वो हुआ, रूबरू हुआ। तो उन्होंने मुझे सीधा क्वेश्चन किया कि मैडम ये आपने ये टीका और ये सिंदूर क्यों किया हुआ है। मैंने कहा मेरे पति की, पहली बात तो मैंने कहा जो चलन में वही बता दूँ इनको, मैंने कहा मेरी पति की लंबी आयु के लिए और सुरक्षित रहे। दूसरा बात है कि हम सेंसिटिव बहुत होते हैं, और उस सेंसिटिवनेस को एक बैलेंस करने के लिए, उस संवेदनशीलता को बनाए रखने के लिए, तो हम यहाँ सिंदूर और ये आज्ञा चक्र है, वो भी मैंने उसको बताया। तो उन्होंने थोड़ा सा उसको बड़े विपरीत ढंग से लिया, और उसको फिर मुझे कहा कि वो लोग फिल्मी दुनिया की पढ़ाई कर रहे थे। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ मैं इस बात के लिए कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में कई ऐसी पढ़ाई चालू हो गई है, जैसे IIT में फैशन एंड टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन। आज सारी जो समस्या है फैशन पे बहुत बड़ी भारी समस्या है इनफैक्ट,
देखिए मैं कोई मुझे कुछ भी कहे, हम हमारे पास लॉजिक है, हम वही वस्त्र धारण करना चाहिए और उसी तरीके से धारण करना चाहिए ताकि हमारी ऊर्जा और हमारी जो एनर्जी है उसको फ्लो हो। सिंपल बात है। बाकी के इसमें मेरा सामाजिक वो नहीं है कि लड़की को ये पहनना चाहिए, आदमी को ये पहनना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ जो साइंटिफिक सही है वो होना चाहिए, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि फिल्मी दुनिया से हमें ये पता चला कि मैडम कैसे हमें पढ़ाई करना है, कैसे आगे बढ़ना है। फिर मैंने कहा कि बेटा नहीं, मैंने तो जब मैं गांव में पैदा हुई, ठेठ गांव में 11 किलोमीटर मैं पैदल जाती थी पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिल्म मैंने कभी नहीं देखी कॉलेज तक, शादी हुई, फिर उसके बाद अभी 2000 मेरे ख्याल से 99 में या 2000 में ज़बरदस्ती कुछ मेरी फ्रेंड्स ना, क्योंकि चाणक्यपुरी में रहती थी, उन्होंने मेरा भी टिकट कटाया, ज़बरदस्ती मुझे ले गई। तो मैंने कहा व्हाट ए वेस्ट, टाइम और एनर्जी और मनी। तो मैं क्षमा चाहूँगी जो फिल्म से बड़ा वो रखते हैं, पर मेरी एक सोच थी वो। मैंने कहा मैं वहाँ पे सोती रही और बस कभी कभी जग जाती तो इतनी ज़ोर से जो साउंड आती थी ना उसके मेरा कान में, फिर मैंने कुछ लिया और वो लगा लिया, या मैं ऐसे करके बैठी रही। इतना साउंड, अब डीजे बज रहा है हर वक्त, ये कावर वाले भी हर वक्त गाड़ी में डीजे, इतना तेज साउंड होता है उसका। आपको पता नहीं कि हम बड़ों के कितना न्यूरो सेल्स का क्या हाल होता है, बच्चों की तो हम दूर की बात है। तब फिर मैंने उनको समझाया कि कोई भी चीज़ जो है वो अंदर से आपकी एक जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासे आप सारी चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं। हम मानते हैं कई चीज़ों का हमें सहारा लेना पड़ता कई लोगों को, लेकिन हम ये भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ होने के नाते मैं क्षमा चाहूँगी जो मेरी बहनें बैठी हैं उनके लिए थोड़ा सा वो उनको अजीब नहीं लगे, मैं एक पुलिस अधिकारी थी और मैंने ये सोचा कि नहीं, मैंने बच्चे पैदा किए, इसकी जिम्मेवारी सिर्फ मेरी है। मेरी माँ ने कहा भी कि बेटा तुम जब पैदा नहीं हुए थे तुम बच्चे पैदा करके मुझे दे देना, मैं पाल दूंगी। मैं कहा नहीं माँ, अगर मैं पैदा करूंगी तो ये मेरी जिम्मेवारी होगी सिर्फ। क्यों मेरी जिम्मेवारी होगी, इसको मैंने महसूस किया उसके बाद। उस वक्त मैं ऐसे ही बोल गई, पर बाद में पैदा करने के बाद मुझे आज ही अच्छी तरह से याद है, मेरा बच्चा अभी 1 सप्ताह का भी नहीं हुआ है और मैं उठी उसके बिस्तर से बाथरूम के लिए गई, क्योंकि मेरा जो बेडरूम था उसमें अटैच बाथरूम नहीं था। तो मैं जब जा रही थी तो मेरी माँ, उसके छोटा बच्चा तो माँ कोई ना कोई बैठ जाता बच्चे के पास में ताकि वो डरे नहीं। तो माँ ने कहा कि ये देखो, जब मैं वापस आई तो उसने वापस मुंह घुमाया हुआ है। तो माँ ने कहा जब तुम गई थी तो ये वापस ऐसे देख रहा था और तुम वापस आई हो तो तुम्हारी आहट से ये वापस तुम्हें देखने लगा कि तुम आ रही हो। 1 सप्ताह का बच्चा अपनी माँ को जो 9 महीने गर्भ में रहा वो क्यों नहीं पहचानेगा। अब छोटे बच्चे को छोड़ करके, मैं तो 1 महीने तो दूर की बात कह रही हूँ, 1 सप्ताह के बच्चे को छोड़ करके चले जाता, उसके ऊपर कितनी भावनात्मक रूप से वह कितना सेटल्ड होता है, पता है उस बच्चे की क्या हालत होती है। और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा इमोशनली साउंड हो, स्ट्रॉन्ग हो, कैसे हो सकता है। जो 9 महीने आपके गर्भ में रहा है और आपकी खुशबू को ही नहीं, आपके स्पर्श को, हर चीज को महसूस करता है, उस बच्चे को आप अचानक छोड़ देते। खेतों में भी, गांव में काम करती महिलाएं तो अपने पीछे पीठ पे बांध लेती है, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। मैं इस बात को, सच्चाई को, क्योंकि सत्य को बोलना बहुत जरूरी है और सच्चाई और ये एक बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हम एक मजबूत विश्व बनाएंगे ना, मजबूत समाज कैसे बनाएंगे जी। एनीवे जी, मैं सही, कुछ और पूछना है? नहीं, ठीक है जी, हो गया। और कोई नहीं, चलिए। हे हिमालय तेरे कितने रूप, छन छन में बदले अपने रूप। कभी तो तू इतना सुंदर लगता है, कभी तो इतना भयानक। हे हिमालय तेरे कितने रूप, छन छन में बदले अपने रूप। अभी अभी आसमान में तारे जगमगा रहे थे और अभी अभी बिजली की गड़गड़ाहट। हे हिमालय तेरे कितने रूप, छन छन में बदले अपने रूप।
ये प्राकृतिक सौंदर्य जो है हिमालय का, वो एक स्वर्ग का एहसास कराता है। लेकिन जब मौसम खराब होता था तो मन में ये भाव उठता था कि माँ ने काफी मना किया था, खतरा मत ले मोर, कहाँ हम लोग आ गए। तो ये दोनों का बोध कराता है प्रकृति। इसलिए मैं आप सबों की स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और आप नए नए अनुसंधान करें, स्वास्थ्य अनुसंधान करें पूरे मानव को और पूरे जीव जितने भी हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी हमारे सुपरा सोलर सिस्टम हमारे वजह से आनंदित हो जाए। हम भी आनंदित रहे, वो भी आनंदित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं क्षमा चाहूंगी, मैं संजीव जी से, संजय जी ना, संजय जी कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा, भाग गया इसलिए। हाँ, मैंने कहा था कि मैं कोई भी सम्मान मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, मैं कोई भी, क्योंकि मैं आवश्यकता में जीती हूँ। आप जो भी देंगे वो मेरे लिए अनावश्यक है। आपकी जो यादाश्त है, आपने इतना प्यार दिया मुझे, आपने जो सम्मान दिया, सदैव मेरे हृदय में रहेगा, ठीक है। और जिस देश में, जिस पूरे विश्व में इतनी सारी समस्याएं हो, हमें उस संवेदनशीलता के साथ रहना पड़ेगा। हमें सम्मानित होने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता है। और मैं क्या बताऊं, ये एक गांव में तो हमारे यहाँ घर में किसी के पड़ोसी की भी डेथ होगी तो पूरे गांव में शादियां नहीं होती थी एक साल। हाँ, तो हमें उस लेवल पे सोचना है। धन्यवाद।